authorities, and the custody of the child shall be handed over to one of the NGOs for giving in adoption after 12 months. This way, His Lordship had struck a balance between the right of prosecutrix and also of the fetus and yet to be born child. Then, in the case of Ganga Kumari versus State of Rajasthan, while order dated 13th November 2017, His Lordship had addressed the issue of a petitioner who was not allowed to join as a constable, as during medical test, petitioner was found to be a transgender. His Lordship held that the petitioner had applied for the post of constable as a female candidate and cleared the physical standard test on the parameters fixed for a female candidate. Therefore, her sex determination was violative of Article 21 of Constitution of India, and sex determination could be ordered only if the candidate's general behavior, external characteristics, society's perception about such candidates is contrary to the declaration he or she has made. Modestly, we were able to take up only these type of decisions, just as a sample. This itself goes to prove what variety of judgments my Lord has delivered under different facets of law. We are happy that my Lord Justice Dinesh Mehta had consented to chair the first technical session on the topic leveraging artificial intelligence and data analytics in tax adjudication. Next, we all are privileged to have amongst us Shri Ankit Verma, Additional Commissioner of Income Tax Systems, who would be our domain expert for the first technical session. Shri Ankit Verma did B.Tech in Mechanical Engineering from IIT Kanpur and belongs to IRS 2013 batch. He was posted in Mumbai from 2016 to 2023, having worked in professional, corporate, central circle, and in international taxation. He had completed Master of Public Administration from Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore in the year 2022. He is presently posted in Systems Directorate of CBDT in Insight project since July 2023, which is the primary data warehouse and analytics platform of Income Tax Department, and hence he would be apt to speak on the topic chosen for the first technical session. We are also happy to have amongst us Shri R.S. Ahuja, Vice President, Delhi ITIT Bar Association, as representative of the audience, and who will assist the panel in taking up the questions from the audience, if any. I now request Shri Mahavir Singh, Honorable Vice President, ITIT Delhi Zone, to extend a floral welcome to Honorable Justice Dinesh Mehta, Shri R.S. Ahuja, and Shri Ankit Verma. Line method. जाओ. I now request Shri Mahavir Singh, Honorable Vice President, ITIT Delhi Zone, for his opening remarks on the topic. Over to you, sir. Honorable Justice Dinesh Mehta, Judge Delhi High Court, Honorable Justice Vinod Kumar, Judge Delhi High Court, Honorable President ITIT, Justice Badang, Mr. Ankit Verma, the domain expert, Mr. R.S. Ahuja, Vice President, Income Tax Bar Association, Delhi,
my brothers and sisters, officers of Income Tax Department, members of Bar Association, members of Institute of Chartered Accountant, officers and official of Law Ministry and Registry of Income Tax Appellate Tribunal, Delhi benches. It is a privilege to be given the opportunity to open today's proceeding on a subject that has over time become increasingly prevalent in discussion concerning law and adjudication, that is, the development of artificial intelligence and its gradual integration into legal institutions. The origin of artificial intelligence are traced to the mid-20th century when researchers in computer science and mathematics began exploring whether aspects of human reasoning could be expressed through formal logic and executed by machines. The term artificial intelligence was first articulated in 1956, marking the emergence of an academic field concerned with computational approaches to problem solving, language processing, and pattern recognition. For several decades, this field remained largely theoretical and research-oriented, shaped by limitations of computing power and data availability. As digital technology advanced, artificial intelligence evolved alongside it. Increased computational capacity, improved logarithm, and the widespread digitization of information enabled AI-based systems to move beyond experimental settings into practical applications. Rather than operating as autonomous entities, these systems functioned as tools designed to process, organize, and analyze large volume of data. This evolution coincided with a broader transformation in institutional functioning across sectors, including governance and public administrations. The legal sphere, given its reliance on structured texts, records, and precedents, was among the domain influenced by this technological progression. The initial integration of technology into legal system was primarily administrative in nature. Electronic database for statutes and judgments, digital case management systems, and electronic filing machines altered how legal information was stored and assessed. These developments did not alter the foundational principles of adjudication, but introduced new methods for managing legal material. With time, as artificial intelligence techniques matured, their presence within legal contexts expanded incrementally. Applications began to include tools for legal research, document classification, and the identification of relevant precedents. It is interesting to see that there are many professionals using artificial intelligence tools for drafting their pleadings. However, artificial intelligence might not have reached the level of perfection for use to completely trust it. For example, providing made-up case laws. Nevertheless, it has facilitated the process of providing a base draft or starting a point for many professionals. The errors in artificial intelligence demonstrate that AI might not replace human intelligence, rather it will only become a facilitating tool for professionals. Hence, it can be seen that across jurisdictions, artificial intelligence has been incorporated in a manner aligned with existing legal framework, operating alongside judges and legal professionals rather than replacing them. Within the domain of taxation,
the interaction between law and technology has been particularly evident. Tax administration and adjudication involves extensive database, recurring legal issues, and complex factual records. As the tax systems become digitized, technological tools were introduced to support filing. One such usage of artificial intelligence by the department is the automated selection of returns for scrutiny assessment. The emergence of artificial intelligence in this area reflects a continuation of this trajectory. Within the Indian context, the Income Tax Appellate Tribunal holds a distinct and significant position as the final fact-finding authority under the Income Tax Act. The tribunal functioning has over the times incorporated technological processes consistent with wider judicial and quasi-judicial developments, that is, digitalization of records, electronic filing of appeals, and online access to orders represents foundational step in this integration. More recently, discussions surrounding artificial intelligence in tax adjudication have focused on its potential role in assisting with tasks such as the organization of case records, identification of coordinated bench decisions, and management of appellate data. In relation to the Income Tax Appellate Tribunal, such developments are understood within the existing statutory framework and adjudicatory structure, with technology operating as a supplementary mechanism. These developments form part of an ongoing institutional evolution rather than a discrete shift. The integration of artificial intelligence into legal and tax adjudication have occurred in stages shaped by administrative needs, procedural requirements, and institutional designs. An understanding of this historical progression provides useful context of examining contemporary discussion on the subject. The detailed exploration of these issues, including their practical and doctrinal dimensions, will be undertaken by a learned speaker, that is domain speaker, Mr. Ankit Verma. With these introductory observations, I respectfully invite attention to the presentation that follows. Thank you. Thank you, Shri Mahavir Singh Ji, for your candid way of giving the introductory remarks for the first technical session. I now request Shri Ankit Verma, Additional CIT Systems, our domain expert, to apprise us of the nitty-gritties of artificial intelligence and data analytics, and as to how the same could be leveraged in our tax adjudication. Over to you, sir. Ladies and gentlemen, distinguished guests, Your Lordship, Honorable Justice Shri Dinesh Mehta, Honorable Justice Shri Vinod Kumar from Delhi High Court, Honorable President ITAT Shri C.V. Bhadang, Honorable Vice President of ITAT Shri Mahavir Singh, esteemed members of ITAT and colleagues, good evening. Thank you for inviting me to speak on the topic of leveraging AI and data analytics in tax adjudication. As we understand, it's a topic that sits at the intersection of technological innovation and our timeless pursuit of justice. So as we navigate an era where AI and its tools impact almost all fields of human operations, a question often comes up as to how can these technologies and related tools enhance our adjudication process without compromising the pillars of equity and human judgment that underline our judicial system. So let us begin by reflecting on the past.
History teaches us that almost all transformative technologies and general purpose technologies bring about profound changes in almost all respects of society and economy. Consider steam engine, which powered industrial revolution, shrinking distances and amplifying our productivity. Then came electricity and atomic energy. Fast forward to the 20th century, we have transistor, which reduced colossal computers into the smartphones that we carry in our pocket, and in the process, it gave birth to the information age. Now, there's something common with all these technologies. Whenever they came with a lot of excitement and promises. Some of the promises eventually came true, like let's take electric car. At one time, they were considered impractical. Now they are quite mainstream. But there were other promises that failed to hold up. For example, in 1950s, at the dawn of atomic age, chairman of the American Atomic Energy Commission predicted that this new technology would make electricity too cheap to meter. And decades later, nuclear energy, as we understand, still grapples with questions around cost, safety, and waste management. And needless to say, we are still paying our electricity bills. So these stories remind us that only as technology evolves and is put to use, we become more aware of its limits and what are the possibilities with it. Hype meets reality, and we learn how to discern that difference. So currently we are at the threshold of another major technological revolution, that's AI. It's a quite general purpose technology like electricity. It will have wide applications, but to understand what exactly is AI, like at its core, AI mimics human thinking to solve problems. So the important word here is mimics. It doesn't have human thinking, but it tries to mimic the human thinking. And to mimic human thinking, it has to learn. To learn, it has to rely on huge databases. So imagine teaching a robot how to play video games. You'll start by showing the robot millions of plays, millions of recorded plays, and it will learn winning moves on its own. No step-by-step code or directions are required. That's our current AI, the one that we use right now. So this learning happens as algorithms spot patterns in large sets of data, like Netflix recommendations that most of us are aware of. So they have large amounts of data on what we had watched earlier, what people in our region are watching, what are the shows that we had liked earlier. So they put together all of it, generate a pattern, and develop recommendations. So like in income tax, if we feed like millions of returns in some AI system for risk assessment, it can spot returns with anomalous claims of expenditure, deduction, or exemptions. So in essence, AI uses math rules algorithms, as we call them, on massive data sets to carry out very simple tasks like chatbots answering questions, or self-driving cars spotting obstacles on road, or figuring out what a particular road sign means, what direction the traffic is moving, or TikTok curating videos. So it's just computers getting faster at guessing and improving. Again, the important word here is guessing. They don't know what is the reality. They are just guessing, and over time the guess gets much better. So now when we bring this technology that tries to mimic human intelligence, human reasoning, human way of working, and is basically guessing or making a prediction, when we bring it to core areas, critical areas like adjudication, so there are only certain set of domains where it will work very well. So it can work in certain targeted domains which have quantifiable parameters. So let me outline where AI incorporation will work best. So first is data heavy pattern recognition. So as we understand, tax disputes often have large sets of data with them, like ITR filing, TDS mismatches,
math calculations. So AI can excel here using data analytics to detect high-risk assessees by cross-referencing PAN data with bank transactions, third-party reporting. Like imagine adjudicating a section 68 unexplained credit case. So here AI can scan millions of entries and flag outliers, far surpassing the capacity of manual auditors. This isn't exactly replacement, it just augments the capacity of auditors, replacing adjudicators for, freeing up adjudicators for more nuanced judgment. Second is helping with legal research. So AI tools can summarize precedents from ITAT orders to Supreme Court rulings. For example, in a transfer pricing appeal, AI can instantly retrieve more than 500 rulings based on cup method applications, highlighting key profit ratios. Data analytics can also overlay trends on what percentage of ITAT decisions, for example, favor taxpayer or departments in BEPS related cases. A third area where it can work very well is analytics for case management. As sir mentioned, AI is quite good with document classification. So it can help in classification of cases by subject matter of adjudication or priority levels, enabling efficient first level triage. So all these steps from filing of appeal to bench allocation to scheduling of hearing dates can effectively be automated. So in these applications, AI will work because of its strength, which are speed, scale, and objectivity when dealing with quantifiable, in quantifiable domains. So think of AI like a tireless junior associate or an assistant. It can sift volumes of case laws in seconds, can flag inconsistencies, and take care of simple administrative chores. But unlike humans, it will lack intuition, it will lack an idea of what is ethics, or even the spark of moral reasoning that at time comes to define true justice. So now coming to areas where AI will fall short, especially in adjudication and tax adjudication. So foremost is wherever contextual nuance and is required or there is some ambiguity. So most of the laws, they rely on interpretation, which will depend on context. So let's just take section 80G or section 11. While determining cases of eligible donations, deductions, and exemptions, an interpretation of the word public utility may be required. So it's a very fluid concept. AI will falter there. It just won't be able to appreciate the context that goes with the facts of a case. So AI will be trained on text. And when it comes to, let's just say, legislative intent or evolving socio-economic context or sarcasm, it will struggle. Second area where AI can struggle is whenever we face new facts like emergent complexities. For an example, take a taxpayer who is claiming work from home expense, which became quite popular after COVID. So AI lacks the experience of having lived through COVID or whatever trends became popular after COVID. So it will find very difficult to comprehend these expenses. It may flag them as high risk. So in adjudication, as we understand, facts evolve, and AI will find it very difficult to probe taxpayer intent. A third area where it will struggle is ensuring equity and fairness. And this is a huge topic of research. So AI inherits biases from training data. If tax data sets skew towards, let's just say, big corporates, it may misapply same set of patterns or principles even to SME cases. Take another example. Let's just say a particular city gets associated with organized tax evasion. So AI will factor that for all taxpayers
from that city. And this will introduce what is called as stereotyping or bias in the system. So in short, AI will work best with pattern matching, but it will stumble whenever you're dealing with, it will stumble with art associated with adjudication. Now coming to the third part, which is key challenges in using AI for legal research and adjudication. So whenever AI tools have been put to use for legal purposes, the certain set of issues have come up. The first and most important issue is one of hallucinations and inaccuracy, which is like making up facts. So AI often invents details. It sounds confident, but may be completely wrong. It has been found that AI tools often cite phantom orders, which are totally non-existent in more than 20% of legal queries. For example, if you ask AI about faceless appeal, it may invent some 2025 ITAT order that never happened. Now that happens because AI predicts, it works on a predictive model. It predicts words. It has no idea of what the truth or the fact is. And as you understand, one wrong cite can ruin a decision. So if we are using these tools, the fix would be that humans double check every output. Now that reduces the promised efficiency gain, but at least the guardrails are there. The second is bias amplification. So as explained earlier, algorithms tend to mirror, or the tools based on the algorithms tend to mirror the limitations of the data. So if the data is flawed, the data has, let's just say, certain biases, the tools and the output will reproduce those biases, and over time our system will have, it will lead to amplification if the output of the tool in turn becomes the input. So that's called some sort of a positive feedback loop. It will generate a positive feedback loop which will amplify the bias over time. So again, we'll like to quote that example of city which gets associated with organized tax evasion. So most over time what it will do is, whenever we input those details that in the taxpayer detail that taxpayer comes from this particular city, the output will get more or less align with the earlier outputs. The third issue that we face is opacity, or the black box problem. Now AI doesn't explain how it thinks. So why would it pick a particular case as high risk? If you ask it, it may not be able to provide you with a detailed set of reasons. Or a why particular ruling applies in a case and not the other, again it may not give you a very clear set of reasoning. So there have been studies that show that almost 70% of AI legal tools fail that why test. If you ask them, they won't be able to tell why they gave up a particular set of recommendations. So as we understand, positions, argument and decisions in any case have to be justified. AI's quote unquote trust me generally doesn't suffice. A fourth issue is data privacy and security. So most of tax information is private. PAN, income level, business transactions, business partners, etc. All of those data is confidential. It is held by the department or even with attorneys in a fiduciary capacity. Now, AI needs big data pools to train itself. Now, most of these training also takes place outside the borders of our country, in servers that we don't control. When we are using AI tools, we'll input the details of a case. And after we provide those details, we have very little control on how that data is used. On the cover, the tool may say that the data that we input may only be used for training. They may even say that the data would be anonymized. So there would be no identifiers attached with the data, but we have very little control once we input those details. So we won't know how many copies of that data is being made, or
how that data is even being shared or monetized later on. So in a way, using legal AI tools risk breaching attorney-client privilege. To be sure, there are solutions to this, obviously like using local servers, encryption, but they are not yet reliably in place. Coming to the fifth challenge, which is regulatory gaps. So as of now, there are no binding norms on how AI is to be used. It is difficult to introduce detailed regulations for an evolving technology. So AI being in a developmental stage, right now it will be very difficult to even introduce detailed regulations for it. And global standards and best practices are still a work in progress. Even basic questions like the nature and extent of disclosure required when using AI for legal research or in submissions before court, they are yet being debated and are to be resolved. Coming to sixth point, which is a dynamic legal evolution. So as we understand that tax laws and jurisprudence updates very fast, very quickly. Unlike many other fields, like say in physics, facts are given, they are immutable. In this particular field, AI is not dealing with immutable set of facts. A single ruling or a change in law can completely alter the legal landscape. And this change will take a lot of time to reflect in AI models, because as AI is just going through the texts, a single change in law may just be one line of change. All that historical document remains the same. So unless and until someone puts an explicit direction that establishes priority and date logic, like what comes later gains precedence over what came earlier, AI tools will tend to make mistakes. So all these factors together culminate in what you call as making AI tools quite unreliable. So going forward, it's not that AI is cannot at all be used for adjudication, but it will require what is a slow and balanced integration over time. You can do it slowly. So for the time being, I will have to see AI just as a tool. It is not a substitute for critical legal thinking, and probably will never be. And as of now, it's not even 100% reliable source of accurate and truthful information. So we can start by using it for simple administrative tasks like case management, and test it small in non-critical or analytical functions. Going forward, we'll have to add checks for bias and accuracy, build lots of guardrails around it, and work up a clear set of rules for where and how it can be used before scaling it up for core functions. So like many general purpose technologies that came before it, AI too can help in diverse fields as technology matures, but we may need to pair it with our supervision and judgment. Thank you. Now, I welcome your questions. Shri Ankit Verma, the questions would be taken up little later, as and when it will be taken up by Mr. Mahuja. Okay. Thank you, Shri Ankit Verma, for your exhaustive address on the topic mentioning the role, advantages and the limitations of AI and the usage of AI and the data analytics in the tax adjudication. So we are very conscious that as of now, the AI only helps us to determine the pattern. If there is a same pattern, it just throws out the info to the income tax department or to the relevant user, and thereafter make it useful for their whatever work they want to take it forward. We thank you for that.
We hope the audience had really been enriched themselves on this particular topic. I now request Honorable Justice Dinesh Mehta, Judge, Delhi High Court, for his Lordship's final remarks on the topic. Over to you, my Lord. Sir. Honorable Mr. Justice Vinod Kumar, with whom I am sitting with last 20 days and being enriched by his knowledge. Honorable President, Mr. Patanda, Mr. Mahavir Singh, Mr. Saluja, Vice President, and Mr. Ankur Verma, the domain expert. I am thankful to the organizers who, being practicing in ITAT and members of the ITAT, being domain expert of income tax, have called one domain expert in AI, Mr. Ankur Verma, and I, who is domain expert of none. Because as a judge, you deal with such a variety and vast subjects. You end up doing every work, right from civil to criminal to service law, and 3 judgments which, with research, and out of artificial intelligence, they have found 3 judgments. Because I have never dealt with these cases here, they were all in Rajasthan. So they have invited me, who is domain expert or none. I am thankful to all. And I don't know on this subject whether I will be able to address you, because I don't have any knowledge of artificial intelligence. But I can still say one thing with certitude. That what will have happened if I prepared a written speech by use of artificial intelligence, maybe Chat GPT or whatever is the forum or platform or the app we use. And Mr. Mahavir Singh could have also used the same Chat GPT. Perhaps I was a dumbfounded man. अरे जो मैं सोच के आया था सब बोल गए. I have nothing to add, nothing to say. So, friends, artificial intelligence may be good aid, as the domain expert has said. But as a common man or as a person who takes things with common sense would always say that it is a handmaiden. As Justice Krishna has said for CPC, that is handmaiden of justice. So I would say artificial intelligence is handmaiden. आपकी servant है, it can't be your master. And we should use this as our aid, as he rightly said. I'll just take one example. A few days back, I read somewhere in newspaper that a car driving on a bridge with the misguide or with the misleading of the AI tool just fell in the river. What happened was that bridge suddenly got broken in the rainy season. He was so confident of his Google map or Google app that he was driving at a high speed, completely being oblivious of the ground reality, whether the road is correct or whether road is, motorable or not. He just kept on driving the vehicle and suddenly fell into the river without realizing that the road is not existing. Had he had any navigator of his friend being using that same AI tool, he would have asked him, but at the same time, the driver would have been cautious of the road. So my friends, my suggestion would be that artificial intelligence should be used as an aid, or you can ask your law researchers or your juniors or your colleagues to use AI to help you. But when it ultimately comes to consume that information, you should apply your own mind. You shouldn't depend upon the AI. If you are an income tax officer, you should not solely depend upon that. When you are a member ITAT, you should not use the information as it is. When you are a chartered accountant going to argue before an ITAT or before an assessing officer, you should
apply your mind, because ultimately it's an artificial intelligence, not intelligence. Any artificial thing can't take your wisdom. And your wisdom, your intelligence has to be used. If somebody asks me to use artificial intelligence, I would like to use it to cook food, because then I will not be requiring my cook. I'll be requiring AI to do my daily chores or homework, because so that my wife or my servants, I don't need servant, and I can ask my wife, please keep sitting, otherwise she always keeps me bothering. Kya sabji banao, kya khana banao, forget it. Just put everything in AI and the AI will suggest you what to cook, what to make. And that will say that on what day Justice Mehta needs what is his preference with the year-long data. But we don't do that. What we do is that we want to use that AI to be used in our profession. Though the matter is pending, I shouldn't discuss it. But just on Thursday or Friday, I was sitting with Justice Vinod Kumar. And a lawyer argued a case. And he said, sir, I think Mr. Agarwal was opposing him from department. Sir, this gentleman has issued me a notice and he has made a reference of a judgment which doesn't even exist. He brought that taxman online citation. That ITO, the assessing officer, though faceless, has used this citation that this is the issue which has been held by ITAT. And when I got the judgment at that page, neither the party name is same, nor is the tribunal same. He says that it is ITAT, but when I brought it, it's I think some other tribunal, I don't remember whether NCLT. It's an LCNT judgment. And the issue involved and facts involved, they are absolutely different. So perhaps the faceless assessing officer, because he thought that I am faceless, so nobody would know. So he has used a AI tool and issued notice. So we had taken quite a serious view of that matter. And it's not one-off incident. Even in Delhi High Court in 2025, Honorable Justice Pratibha Singh has taken the things very seriously and has directed all the authorities. You may cite and you may go through the judgment, and that you can use AI for that, sir. It's Justice Pratibha Singh's judgment, and wherein she has taken things very seriously and said and practically laid down guidelines that all assessing officer, it was a case arising out of some SESTAT matter, excise authorities matter. And she has used guidelines that how, to what extent you can use AI. So these are the things, because AI gives you help, but at times it leads to accident. Say if you use AI in translation, because I hail from Rajasthan, where most of the work is done in Hindi. In trial court or subordinate court, it is done in, sorry, I shouldn't use subordinate court, trial court and district judiciary. Most of the work is done in Hindi. When the matter comes to High Court, they translate it. And at times translation is so erroneous, but times it is so funny that it gives you a laugh. Just I'll tell you one or two examples how artificial intelligence or the things which have been done by use of artificial intelligence can be erroneous. Many a times you will find ट्रायल कोर्ट में लिखा है, हिंदी में लिखा जाता है, आई थिंक दैट मच हिंदी एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, आगामी पेशी 17 जुलाई को दी जाती है. ट्रांसलेशन वाज दैट फ्रंट मसल is on 17th. I kept on scratching my head. What is this front muscle? While I was thinking, what is the front muscle? Thodi bahut English I also know, but I am not getting it. It's a idiom or what? Then I asked for the original record. Then agami peshi, agami front peshi, matlab mass peshi ka hota muscle. Then I also saw one more, that the expression used was demise premise. You as a chartered accountant lawyer must be used demise premise is normally used for a property which has been let out. उसमें लगा मृत भूमि, मृत मकान.
Mrit Bhavan, I mean Marava Bhavan, because demise is literally translated, comes to Mrit. So there are so many things. In Supreme Court's order or in High Court's order, you will normally find leave granted. Translate to Hindi, dekha chutti di gayi. So if we use artificial intelligence without use of our own intelligence, which Almighty has given us, I mean, it's fatal. We should avoid doing this. I don't want to take you to the nuances of artificial intelligence, to what extent it can be used. Yes, I don't want to discourage you from using artificial intelligence, but just remember those days when you used to have guides. Taxman guide, income tax guide, Palki Wala, Pitashira Chaturvedi. If you read them, if you want to see a judgment on ATG, if you want to see any judgment on income, you'll find not only one judgment, you will run through at least 20 judgments. To find which is the most appropriate judgment for you, you will run through 20 judgments. And the moment if you run through all those 20 judgments, you sift through all those 20 judgments, you are sure that which case is most suited to my case, one. Number two, other 19 judgments may not be of relevance to you today, but they will always be kept in your mind somewhere, in your passive memory. And when other times when that case comes, you will suddenly retract that this is the judgment I wanted to see and I've read somewhere. But if you use artificial intelligence, you just insert a few words, it will get that will give you 500 judgments. And again you will refine the search, because that works on algorithm. Algorithm means this is the word that will catch, and if your search tool is good or your way of search is good, then only it will beget you a correct result. Because for use of artificial intelligence, not only your tool must be good, you must be capable of using that tool. Both things are very, very important. So I don't discourage anybody from use of artificial intelligence, but I just want to say that let us use it with a word of caution. Let us use it with a degree of sensitivity. And I was wondering, suppose, as he suggested, suppose somebody uses artificial intelligence for, I just taking example from his speech, that for preparation of transfer pricing, we should use cup method. Suppose ITO uses cup method and he comes to X conclusion. Okay, his conclusion is very good. If the SSC files an appeal before the appellate authority and commission appeals, he also uses the same tool. What will he do? Because he will get the same relief, same result. If that appeal comes to ITAT and they use the same artificial intelligence, that will further that will fortify that decision, because two authorities have also taken a view. Because algorithm or artificial intelligence work upon the number of data which have been fed. It doesn't work on the basis of the nuances of law and factual metrics which is involved. They may forget which judgment is binding. Suppose we are dealing with a matter in ITAT Delhi, before ITAT Delhi. A decision may be from Kerala High Court, decision may be from Karnataka ITAT, decision may be from Delhi own High Court. I'm not very sure. Perhaps it works on algorithm. It will go on number of the judgments which have been delivered. Suppose Karnataka High Court or Kerala High Court have delivered 10 judgments on a particular view, and Delhi High Court, which is binding on you, might have rendered only one judgment. I am sure with my little understanding of law and my common sense, that will definitely suggest the view which has been taken more number of times than the view which is binding on you. So then you'll be guided by the wrong conclusion, wrong decision. Because AI doesn't understand, at least as of today, that which view is binding on which part of the world.
Because it doesn't know where are you working from. It doesn't know you are working from Delhi or you are working from Bombay. And maybe you are traveling to Hyderabad and your location is on, but you are preparing for a matter in Delhi. That may suggest you something which is, suppose even if you modify and tweak the AI, then it will go by your location. That yes, Mr. Ankur is working at Hyderabad, so I must suggest what binding law is there in Hyderabad. Completely being obvious that he is sitting in Hyderabad, but he may be using this information or judgment in Delhi. So friends, these are the caution I just want to flag. I want to underscore. Thank you very much. I am enlightened. I am very happy to be here. Thank you. Friends, you would all agree with me that my lord started the speech by saying that he is a domain expert of none, but later on went on to throw deep insights on the usage of artificial intelligence. At least I am not domain expert of speech. Well said. And my lord had also brought out the basic difference between artificial intelligence and intelligence, so which is very, very crucial to know. Thank you, my lord. I now request my lord Justice Dinesh Mehta, Judge Delhi High Court, to give a memento on behalf of all of us to the domain expert Shri Ankit Verma, IRS. We also request my lord to present a shawl to the speaker, domain expert, Mr. Ankit Verma. I now request Shri R.S. Ahuja, Vice President, Delhi IT/IT Bar Association, to propose formal vote of thanks for this session. And you can also take questions from the audience, if any. Honorable Justice Dinesh Mehta, Judge, Delhi High Court. Honorable Justice Vinod Kumar, Judge, Delhi High Court. Honorable Justice C.V. Batang, President, IT/AT. Shri Mahavir Singh, Vice President, IT/AT. Shri Ankit Verma, Additional CIT Systems. Honorable members of the IT/AT, departmental representatives, members of the IT/AT Bar Associations, member of other bar associations, staff of IT/AT, ladies and gentlemen. May I, on behalf of the IT/AT Bar Association and all present here, extend 85th birthday greetings to the IT/AT and request as President, Honorable Justice C.V. Batang, to accept the greetings. May I request everybody to give a standing ovation, please. Thank you. It's a privilege to be part of the 85th celebration of the creation of this august body. When you greet someone on the 85th birthday, you are not so upbeat of the future. You're normally talking of the past. But today, it's a different story. We are very positive, very excited about the future of this very young, supple, and brilliant organization which has withstood the test of time.
Frankly, this event should be organized by the taxpayers, by the representative bodies of the tax cause, the trade associations like FICCI, PhD, etc., to salute the yeoman service that this institution has given over the years in the dispensation of justice, which is reflected in their motto, Nishpaksh, Sulabh, Satvar Nyay, impartial, easy, and speedy justice. ITAT is an organization of hope, trust, and faith. It's a beacon of light for the taxpayers who end up here after a long and dark journey. About AI and application to such forums like the ITAT, I feel that the powerful minds on the benches across the countries have to be the agents of justice dispensation, and AI will be a tool to assist them. The ingenuity of the human mind cannot be allowed to be dominated by AI. AI is a powerful source of energy which has to be used by a very evolved user with a lot of care for it to be productive. AI वो पागल घोड़ा है जिसमें बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, पर उसे बहुत सतर्क चालक ही चला सकता है, नहीं तो वो घोड़सवार को ही गिरा देती है. This view has been reflected by Honorable Justice here on the bench, on this view here, and also in a lot of legal judgments on this issue. I thank Shri Mahavir Singh, Vice President, Delhi Zone, for his opening remarks and setting the tone for the evening. The domain expert, Shri Ankit Verma, has done an incredible job because he has been very fair to admit the pitfalls and the strengths of AI. Honorable Justice Dinesh Mehta, Judge Delhi High Court, in his final remarks, has in his own simple and humorous way told us what we have to be careful about. I thank Justice Vinod Kumar, Judge Delhi High Court, for his august presence here. On behalf of the Tribunal and the ITAT Bar Association, I thank all the speakers and all present here for this engaging and engrossing session. If there are any questions which you'd like to ask the august speakers on the bench, on the dais here, you may please. About the AI, and when the AI selects some judgment here, sometimes it comes out that this judgment was never existent here. Because the problem is that, my understanding is that there is no specific depository of the judgment on the income tax subject on any specific platform. Like when we use the Taxman, it is a private platform. When we use the ITR, it is also a private platform here. Like the Supreme Court, we have the SCR, and the Supreme Court has digitized all the SCR from the beginning here in 1951. After that, all the things are available here. Since there are multiple source of judgment that is coming from the tribunal, from the High Court, like this one's here, can the Income Tax Department take a lead to create a depository of the judgment here, through which we can say that, yes, it is an authenticate source from which the judgment should be gathered, and that judgment should be quoted for the purpose of any order or for the purpose of any appeal that can be done here, which will give a very responsible, that can be held, that will help in the litigation and in the tax profession also. And it can be a very responsible and very authentic source of the judgment here
or the circular what we try to quote here. Like the income tax sites are there, yes, when we try to go for any circular, we try to go for the income tax site to, yes, find out, yes, these circulars are there here. To just develop the site here more here, to make it more robust here, can the judgment can also be uploaded there? I think that's a very good suggestion that you made. And would you like to say something on that, Ankit sir or my lord? So, to answer your question, obviously that can be done, probably that should be done. But we have to understand how AI works. So it is generating text, and when it's generating text, it just predicts the next word. So you can put a limitation or a bar saying that whenever it's quoting a judgment, that set of words, that string, should come from a document that you mentioned, which contains all the real case laws, real judgments. But anywhere else in the document, it can still go ahead and hallucinate and produce a citation that doesn't exist. Like, it may make a reference without providing the exact, not quoting it like a case law, but will still hallucinate. My Thank you, sir. point that I'm trying to raise, sir, in all the judgment, the short notes are being prepared by manually here. They are not coming out from the judgment here. Some judgment is there on section 68, but short notes have been prepared by some taxman people or like this ones here, who may not be aware of that type of this one. It may happen, the issue was discussion of the 68 here, but the decision was on the maintainability of the writ here. That part, that cut. So, point that I'm trying to say, if we have the authenticated source of that type of judgment here, particularly on the issue that is there, then we can rely upon that source, and that, yes, and we can say that it is that bank, it is the judgment bank and reliable judgment bank which can be extracted for the purpose of any litigations here, and that will give an authenticate source here. There is a answer in your question itself. You say that data should be created. Everybody agrees, yes, database should be created for AI for all judgments. That is for Government of India or Income Tax Department, as you told that Income Tax Department create it. Let them take a call on this. We are not aware, but still there is no data available as such. That income tax tribunals orders or high court orders, it is available on the respective websites. But no data is created for AI actually till date. That is for Government of India or concerned department like Income Tax Department. But tribunal, we do not know yet. There is no policy decision yet. I think we can put an end to this here, because I think we are running out of time, sir. I think. So we're talking about the database. Can we expect, in fact, I've taken up earlier also, when any member, maybe member or even in the courts, judges, they deliver a judgment right in order, can at the bottom of order, can it be put up sections covered? So that would make help in making a compilation of whatever judgments or whatever sections are covered in that particular order or from that particular order. No, somebody, a member is writing. When a member is writing, probably they know. Thank you. Thank you, sir. So I now request all the dignitaries on and off the dais and the guests to make themselves comfortable and enjoy the high tea which is being arranged in the foyer area, and assemble back at 5:20 p.m. positively for the next technical session, where we have the privilege of having amongst us Hon'ble Shri Law Minister Shri Arjun Meghwal ji, along with Honorable Justice Vinod Kumar, Judge Delhi High Court, on a very, very live topic of happiness quotient and productivity, to be presented by Dr. Pallavi Deshpande, who is a spiritual wellness coach on this.
So I request each one of you to kindly make yourself comfortable and kindly assemble back within 10 minutes. Thank you. करवा देना
Check, check. Hello, hello. Check. Hello. Test 1, 2.
हेलो हेलो हाँ उसको भी ये सर हेलो हाँ कर रहे थे रिचार्ज करने के लिए So I request everyone to kindly get back to their seats. Honorable Law Minister had already arrived. We will be starting the second session shortly.
Ladies and gentlemen, kindly be seated. We have to start the second technical session. In the presence of the Honorable Chief Guest, kindly be seated. Guests from the foyer area are kindly requested to come to the auditorium so that we can start the second session. Ladies and gentlemen, kindly be seated. We can start the second technical session. Kindly switch off your mobile phones or electronic gadgets or put them in silent mode. Guests who are still stationed in foyer area are requested to come to the auditorium. I now request all the dignitaries to be seated on the dais, starting with Honorable Shri Arjun Meghwal ji, Minister of State, Independent Charge, Minister of Law and Justice, and Minister of State for Parliamentary Affairs, Government of India, Honorable Justice Dinesh Mehta, Judge, High Court of Delhi, Honorable Justice Vinod Kumar, Judge, High Court of Delhi,
Honorable Justice Retired Shri C.V. Badang, President ITAT, Dr. Rajiv Mani, Honorable Union Law Secretary, Honorable Shri Mahavir Singh, Vice President ITAT Delhi Zone, Shri R.S. Sahuja, Vice President Delhi ITAT Bar Association. Ladies and gentlemen, we start the proceedings of the second technical session, starting with felicitation of the guests by the President of ITAT, Honorable Justice C.V. Badang Sahab. I request Honorable President to first felicitate Honorable Law Minister by presenting the plant, shawl and memento. I request Honorable President to felicitate Honorable Justice Dinesh Mehta by presenting the plant, shawl and memento. I request Honorable President to felicitate Honorable Justice Vinod Kumar by presenting the plant, shawl and memento. I request Honorable President to felicitate Honorable Dr. Rajiv Mani by presenting the plant, shawl and memento. I request Honorable President to felicitate Shri R.S. Sahuja by presenting the plant, shawl and memento. I now request Dr. Pallavi Deshpande to kindly come to the dais. I request Honorable President to extend a floral welcome to Dr. Pallavi Deshpande.
I now request Honorable President to deliver his opening remarks on the topic for second technical session. Over to you, sir. A very good evening to all of you. Honorable Law Minister Shri Arjun Meghwal ji, Honorable Mr. Justice Dinesh Mohan, Honorable Justice Vinod Kumar, Judges Delhi High Court, Honorable Law Secretary Dr. Rajiv Mani, Shri Mahavir Singh, Vice President ITAT, Vice President and members of the tribunal who are physically present and those who have joined virtually, Shri R.S. Ahuja, Vice President ITAT Delhi Bar Association, Dr. Pallavi Deshpande, the spiritual wellness coach for this evening, members of the legal fraternity, chartered accountants, office bearers of the bar associations, departmental representatives, and ladies and gentlemen. I am really happy to welcome all of you to the 85th Foundation Day celebrations of the Income Tax Appellate Tribunal. As all of us know, the tribunal was established on 25th January 1941, initially with only 3 benches at Mumbai, Kolkata and Chennai. Over the period of time, the number of benches have gone up, and presently the tribunal has a sanction strength of 63 benches comprising of 126 members. The establishment day of any tribunal is really a time when you should introspect, retrospect, as well as look to the future. For the purposes of administrative convenience, the tribunal is decentralized into 10 zones across the country, and it has benches at 30 stations, including a circuit bench at Varanasi and Dehradun. The tribunal as a quasi-judicial body was established by the Parliament to deal with the disputes in the direct tax laws and has dispensed justice in an exemplary manner for the last 85 years. In the 85 years of its existence, the tribunal has witnessed material changes both in the income tax laws as well as the economic affairs of the country, which are closely related to the number and the complexity of the tax disputes. The tribunal was formed under the old Act of 1922 and had witnessed its first revamp of the direct tax laws in the year 1961, when the current Income Tax Act was in force. The tribunal is on the verge of witnessing yet another change in the coming 3 months. The position of the tribunal has also undergone a change after the framing of the Tribunal Reforms Act 2021. Although in the last decade the tribunal has witnessed substantial reduction in pendency of nearly 50% from 91,000 in 2016 to about 48,000 in 2026. The present trend shows that the tribunal is slowly witnessing a spurt in filing of the appeals. As all of us know, there are 3 major issues which are presently sub judice before the Apex Court, involving the limited issue in the Roka bathroom and the shelf drilling cases, and the second being the interplay between the jurisdiction of the jurisdictional assessing officer and the faceless assessing officer, and last but not the least, the Dean issue. As of present, the final outcome of these disputes would have a significant bearing on the pendency of the tribunal in one way or the other. In the last 2 years, if we retrospect, we have taken significant steps for improving the infrastructure of the tribunal. Presently, the construction of the buildings at Kolkata and Ahmedabad is underway and is expected to be completed soon. Recently, we had a breakthrough in resolving a long-standing dispute of a land at Guwahati with the active intervention of the Honorable Law Minister. Presently, we are exploring the possibility of an alternate land at Mumbai, where the head office of the tribunal can have its own building. I propose to place on record my appreciation for the active involvement and the support extended by the Law Minister and the Law Ministry from time to time. As you know, in the last year,
if we retrospect, we had an All India Members Conference at Panji, Goa, where important subjects came up for discussion. Today, we had the first technical session on the subject of leveraging artificial intelligence and data analytics in tax jurisdiction, in which we had a very meaningful discussion and would go a long way in integrating the latest development in the field of artificial intelligence and machine learning in the adjudication of tax disputes by the tribunal. I am happy to note that the Honorable Law Minister had expressed a wish to hold a discussion on happiness, which is a subject which may not be directly connected with any legal field, during the conference at Goa. Nonetheless, the subject is as important as it can be. I am happy that the same is materializing today. I recollect that about 6 months back, the Bar Association at Delhi had also taken a lead to hold a short workshop on happiness. And in my 40 years of legal career, I found that this was the first occasion where a Bar Association had taken a lead to deal with a subject which may not be directly connected with law. It is our constant endeavor to find happiness and contentment in our daily life. However, the experience is that more often than not, the happiness and the contentment eludes us. Although it is difficult to define happiness with any amount of precision, happiness is, in my opinion, is an internal feeling which a person can get if he is at peace with himself. I am happy that today we have amongst us Dr. Pallavi Deshpande, who is an expert on the subject. She is an expert in multidisciplinary subjects related to holistic health. She is touted as the first youngest Indian magician to perform abroad, and her name is recorded in the Limca Book of Records. She is a qualified physiotherapist and a founder and director at Empower Expansion Bees at Nasik. She is known for her integrated approach of blending physiotherapy with preventive health care, holistic nutrition, and pranic healing. She has given yeoman service to the cause of health and wellness of several persons. Her emphasis today would be on practical aspects of attaining holistic health with the necessary theoretical background. I hope and trust that today's session would go a long way in motivating all of us to adopt a holistic health involving body, mind, emotions, and soul. As per the World Happiness Report, ranking of the happiness index of various countries across the globe, it shows that the Finland ranks first and India somewhere near 124. However, it is significant to note, and it was also mentioned by the Honorable Law Minister this afternoon when we had a conversation with him, that the parameters for deciding as to what is the rank of the happiness would differ, because the shift should be from materialistic happiness to one which is based on spirituality. And there perhaps India may be ranking much higher. I don't propose to stand between you and the expert today because we are again running against time. I thank all these experts here, Dr. Pallavi Deshpande, who at a short notice had come all the way from Nasik. And my sincere gratitude to the Honorable Law Minister for suggesting this subject, which is very close to our heart. I hope and trust that today's session will go a long way in attaining holistic health and happiness, which is the pursuit with which we awake every morning. Thank you. Thank you, sir, for your introductory remarks. I now request Dr. Rajiv Mani, Honorable Union Law Secretary, for his address on the occasion. Over to you, sir. Honorable Chief Guest for today's function, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Minister of State, Law and Justice, Independent Charge, and Minister of State in the Parliamentary Affairs.
Justice Dinesh Mehta ji, Honorable Judge, Delhi High Court, Justice Vinod Kumar, Honorable Judge, Delhi High Court, Justice C.V. Bhadang ji, President, Income Tax Appellate Tribunal, Shri Mahavir Singh ji, Vice President, Delhi Zones, Shri R.S. Ahuja ji, President, ITAT Bar, Shri Balaganesh ji, Member, ITAT, Dr. Pallavi Deshpande, Spiritual and Motivational Speaker, esteemed guests and members of the ITAT in the audience, and those who have joined virtually, officers of the Income Tax Department, officers of ITAT, guests, ladies and gentlemen, namaste to all of you and a warm good evening on this day. I'm really thankful to the President ITAT for having invited me for this function on such an important topical subject, which is actually related to each and every person as a human being. We are all, in search of pursuit of happiness. Indian philosophy, right from the ancient days, had sought this, what constitutes happiness. We have been seen in historical anecdotes that the perception of happiness varies from the theory of Charvak to that of Lord Buddha. The Charvak philosophy thought that happiness only is in the material gains which a person can achieve in his life. And that alone suffices, and there is nothing prior and nothing beyond life. We have another example of Lord Buddha, though born in a royal family, well cared and protected throughout his life. But when the occasion happened that he saw certain events which actually must have brought a great deal of turmoil to him. He had never seen pain, he had never seen sorrow, he had never seen someone ill, sick. The first interaction of his with such things in the life actually had, I can presume, must have shocked him. He renounced his worldly life, his royal life, and went in search of the truth. The middle path propounded by Lord Buddha actually is the right way to pursuit of happiness, I think. What constitutes happiness, of course, may differ from civilization to civilization, from societies to societies. But the fact that a person who is contented, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा सुख जीवन में संतोष का सुख है. A person who is contented, I think he will always be happy, whatever be the circumstances. Contentment actually shows on your face, in your personality, in your actions, whatever profession, whatever vocation you may be with. We also have an example of Raja Janak, father of Sita ji, who was also called, Sita ji is also called Vaidehi, because his Janak was also known by the name of Videha. And he had no worldly attachments despite being a king, a ruler. एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपको विदेह क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने कहा मैं समय आने पे आपको बताऊंगा मुझे क्यों इस नाम से पुकारा जाता है. भाग्य का चक्र ऐसा चला कि वो व्यक्ति जिसने उनसे ये प्रश्न किया था, उसको किसी मामले में सजा हो गई और उसको जेल में रखा गया. उसके जेल के प्रवास के दौरान और उसको मौत की सजा भी सुनाई दी गई कि भाई इसको दंड मिलेगा. और उस दौरान उसको सबसे बढ़िया से बढ़िया भोजन और ये सब पकवान उसको भेजे जाने लगे. एक समय आया जब अगले दिन उसका जीवन का अंतिम दिन था, तो राजा ने उसे बुलाया और उसका पूछा कि कैसे तुम्हारा हालचाल है, कैसे हो तुम. मैंने तो तुम्हारी बहुत अच्छी खातिर की, तुमको बढ़िया से पकवान मिला, जो तुमको पसंद जो भी पकवान पसंद थे वो तुमको मैंने भिजवाया, कैसा लगा तुमको. उसने कहा कि मुझे किसी भी पकवान में कोई रस नहीं आया. राजा जनक ने तब कहा यही मैं तुमको बताना चाहता था कि मैं भले राजमहल में रहता हूँ, राजसी वातावरण में रहता हूँ, पर किसी चीज़ का मैं रस नहीं लेता, मैं किसी रस के अधीन नहीं हूँ, इसीलिए मुझे विदेह कहा गया है. मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको निर्लिप्त भाव से निभाता हूँ.
हमारे महान ग्रंथ भगवत गीता में भी यही संदेश भगवान ने दिया है कि आप काम करिए, अनासक्ति से करिए, अपेक्षा मत करिए। सुबह हम लोग देखते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि कितने सुबह हम लोग जागते हैं, मजदूर जा रहे होते हैं, कंधे पे बच्चे को टांगे होते हैं, पीछे पीछे उसकी धर्मपत्नी होती है, हाथ में खाने का डिब्बा होता है, और हंसते गाते मुस्कुराते ऐसे जा रहे होते हैं जैसे जीवन में सबसे सफल व्यक्ति वही हों। जबकि सच्चाई ये है कि कल उनको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल उनका जीवन यापन चल पाएगा नहीं चल पाएगा, रोटी चलेगी कि नहीं चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मन का भाव है, और वो भाव उनके चेहरे पे प्रकट होता है कि उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जो है वो पर्याप्त है। हमारे समाज में कई ऐसे संत हुए हैं, साधु हुए हैं, जिनको कृपा पात्री के खाली हाथ के कर में जितना भोजन आता था उतना ही ग्रहण करते थे, और कल की क्या होगा कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं। हम जानते हैं कि दुनिया में एक से एक अमीर लोग हैं, एक से एक शक्तिशाली लोग हैं, एक से एक प्रभावशाली लोग हैं, पर क्या वो प्रसन्न हैं, क्या वो सुखी हैं, वो अलग विषय है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो प्रसन्नता का वातावरण हम अपने आसपास और अपने अंदर देखना चाहते हैं, उसके लिए हमको अपनी सिविलाइजेशनल हेरिटेज की तरफ देखना चाहिए, जो हमारी लेगेसी है, इतना रिच लेगेसी हम लोगों को मिला है, फिलॉसफी का, स्पिरिचुअल का, हमारे दैनिक जीवन में कई बार मैनिफेस्ट होता है, पर चूंकि अपने दैनिक काम काज में हम लोग लगे रहते हैं तो इतना उस पर ध्यान शायद नहीं दे पाते। पर ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मंत्री जी ने, जो कि खुद ही बहुत बड़े एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर और स्पीकर हैं, उनके सुझाव पर ITAT के प्रेसिडेंट साहब ने आज ये सभा रखी, और इस सभा में एक डॉक्टर पल्लवी देशपांडे को बुलाया है, और हम लोग सब चाहेंगे कि उनको सुने और उनसे अपने जीवन को मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your remarks. I now request the domain expert for this session, Dr. Pallavi Deshpande, spiritual wellness coach, for her presentation on the topic happiness, quotient, and productivity, which we are all eagerly awaiting. On behalf of ITAT Delhi benches and the entire ITAT administration, we would like to inform you that we also have the presence of our family members, given the topic chosen for this session. So, the presence of them in this official function would be in the larger interest of the family harmony. So, consciously the ITAT administration has chosen it. Okay. Over to you, ma'am. Namaste everyone. No intentions to fool you, but just raise your vibrations. I am myself learning to shift my awareness from impressing to self-expression. Honorable Law and Justice Minister Sir, Arjun ji Meghwal, Justice Dinesh sir, Justice Vinod sir, thank you so much, and a deep, deep, deep gratitude to Honorable C.V. Bhadang sir, Dr. Rajiv Mani, and all the dignitaries here, और आप सभी महानुभावों को मेरा तहे दिल से प्रणाम. Let's invoke the divine blessings and begin. So I would request कि I understand कि सबका एक एक नज़रिया है खुशी को एक्सप्रेस करने का और खुशी को समझने का, देखने का, बट जब तक मैं अपना टॉक कंप्लीट कर रही हूँ, क्या हम उस नज़रिए को थोड़ी देर के लिए अलग रख सकते हैं? Yes? फिर आप अपना अपना नज़रिया चाहे तो फिर से अपने साथ, it's your choice. Yes? So complete surrender.
well, I'm a healer, so I do understand that as well. So I would request everyone to keep your hands uncrossed and legs uncrossed. Sit a little taller, keep a smile on your face. And let's begin with invocation. हम साथ ही प्रेयर करेंगे. Is that fine? आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हो. दोनों देख नहीं पा रहे हो मुझे? ये शिफ्ट हो जाएगा? ये ठीक है? या दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हैप्पीनेस किसी के लिए खाना पीना वेकेशंस, किसी के लिए अपनी हॉबीज़, अपनी पैशन को जीना, अपने काम में पूरा खुद को झोंक देना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना, और शायद आपका अपना अपना और नज़रिया जैसे हम बात कर रहे थे. 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं. वन इज़ डोपामिन. हमारे प्रोफेशन में जब हम पेशेंट्स, आज इतने पेशेंट्स, इतने लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया आपके लिए, इतने केसेस क्लोज हो गए, इतना सर शेयर कर रहे थे कि ओके दिस इज़ व्हाट, ऑफ कोर्स वो होना चाहिए, बट या दैट इज़ यू, दैट्स वन ऑफ द हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामिन. देन इज ऑक्सीटोसिन. मैं घर जा रही हूँ, मेरी दोनों डॉटर्स, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, मम्मा, एंड यस, व्हेन यू फील लव्ड, कनेक्टेड, यू, वो हार्मोन सिक्रीट होता है. इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस हार्मोन्स. देन इज सीरोटोनिन. हम मेडिटेट करते हैं, हम कोई सीरीन जगह पे जाते हैं, नेचर में होते हैं, ग्रीनरी. एवरीवन हैज एक्सपीरियंस्ड इट. Yes. And then is endorphin. When you exercise, when you feel worthy, huge applaud. But ये सब जब हम ये करेंगे तब ये हार्मोन सिक्रीट होंगे, तब you feel good. So it could be a trap, isn't it? हम उसके अधीन चले जाएंगे, right? So we need to, and I have always had this urge to understand how we can reach that a little more unshakable experience, more fulfilling. So I have come up with my own structure of body, emotions, energy, and soul. I call it
B's protocol. I started my journey as a physiotherapist when I was into like hardcore restoring the body. But बहुत बार ऐसे होता था कि हम लोगों को पेन कम कर देते थे और फिर वो बोलते थे कि हाँ हमें इमोशनली भी बेटर फील हो रहा है अभी, पर तब समझ नहीं आया कि कैसे हम शरीर पे काम कर रहे हैं और हमने तो इमोशंस पे काम ही नहीं किया। और फिर उसे डीपर अंडरस्टैंडिंग से और आगे लेकर जा पाए। अभी यहाँ पर आप में से कई लोग, हम जब प्रेयर कर रहे थे आप ऊंचा बैठे थे, isn't it? And now again. So what happens is, because of the, maybe it could be because of the influence of gravity and the inefficiency of your muscles to hold your skeleton in upright position. As a physio, I understood that restoring the body is very, very crucial. But आप और हम बहुत बार क्या करते हैं? इन signals को, may it be the change in your posture or it could be pain as a signal, हम इसे या तो suppress करते हैं या ignore करते हैं या mask करते हैं, isn't it? जैसे आपके, if my example is correct, वो ट्रायल कोर्ट्स में केस आता है, नोटिस आता है, और वो अगर तब इग्नोर किया गया तो वो मैटर कॉम्प्लिकेट हो जाता है. सो these are signals, and I always encourage to respect these signals as messengers. So आप अपने आप को पूछिए कि आप कहाँ हो, आप अपने आप को रिस्टोर करने के लिए मेडिसिन लेते हो या इग्नोर करते हो. हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी? आई एम अ फिजियो. पोस्चर इज वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? तो हमारा जो स्पाइन होता है, इट इज एस शेप्ड कर्व, राइट? सो नेक ऐसे होता है, मिड बैक ऐसे होता है, एंड लो बैक ऐसे. व्हेन यू आर टायर्ड, अभी जितने भी लोग थोड़े स्लाउच्ड बैठे हैं उनके लिए, सो व्हाट डू यू डू? योर बॉडी विल स्टार्ट गिविंग यू पेन एज अ सिग्नल. फिर आप क्या करोगे? आप उसको या तो सपोर्ट लो बैक के लिए ले लोगे, या आप क्या करोगे? मेडिसिन ले लोगे, या आप क्या करोगे? हाउ इज योर सर्कल? आप मेडिसिन लेते हो, ऑइंटमेंट लेते हो, एक्सरे, एमआरआई, मे बी यू विल, किसी ने आपको बोला ओके आप वजन कम कीजिए, यू विल स्टार्ट गोइंग फॉर वॉक और यू विल जॉइन अ योगा. बट आर वी बीइंग अवेयर कि हाउ कैन आई रिस्पेक्ट माई पेन एज अ सिग्नल कि मैं उसे राई हो तभी अटेंड करूँ और उसे पहाड़ नहीं बनने दूँ. Am I doing any specific work? क्या मेरी दवाई खाने से ये अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा? क्या मेरे वॉक पे जाने से मेरा जो इनएफिशिएंसी है, मस्कुलोस्केलेटल इम्बैलेंस, वो ठीक हो जाएगा? So there are muscles that become tight over a period of time, and few muscles go into stretch weakness. So am I even considering to understand how do I put this structure? हमें बहुत बुरा लगता है जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. इट इज़ टू लेट. हमें लगता है अरे ये पहले आते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती. So understanding your body signals, respecting your body signal is very, very, very important, and we can take support. It's just about, my invitation to you is taking timely support. That my body is my soul's temple, and I need to take care of it, need not exploit it, suppress it, or ignore it. जैसे हम एक छोटे बच्चे को हैंडल करते हैं, when I listen to that signal with more compassion, more respect, my actions are different, isn't it? And then considering nutrition as one of the very
key thing when it comes to your physical body and its capacity. हमारा जो taste buds होते हैं ना, वो सिर्फ it is 1/3 part of your tongue. Rest we need to consider what is more nourishing to it, isn't it? But we get trapped in what feels better, or short-term pleasures and tastes, isn't it? So understanding the deeper perspective, me and Madhavi Bhadag ma'am, we have recently come up with books on holistic nutrition कि भाई हम अगर ignore करेंगे तो what will happen is we will end up inviting diseases like blood pressure, diabetes, and again what will we do? We suppress it with medicines. So if we understand that कैसे अभी recently नरेंद्र मोदी सर ने भी इसका mention किया था that we decrease the quantity of oil and increase the quantity of millets in our food, and that is what we are doing. I'm into that field also since a very long time. And we have come up with cooking, learning to cook with natural oil. पर किसके पास समय है? No, we are just in a rat race. वो awareness से अगर हम छोटी छोटी changes start करें at all levels, तो हम उसे राई का पहाड़ बनने से रोक सकते हैं. And I think that is what is more long-term thinking or awareness-based thinking. Do you all agree with me? And when it comes to emotions, I would like you all to be more interactive. कि हम सब तो अच्छा feel करना चाहते हैं. Who doesn't want to be happy? No one. Then why do we end up feeling worse? And what do you do to restore your emotions? Can we have a quick sharing? I know it's a little confronting conversation, but क्या करते हैं हम? Music? Yes? हाँ जी? Meditate? हाँ. Yes, sir. Prayers? जी. Gym? Walk? Yes. Running? Yeah, that is flushing of emotions. Great. Yes, sharing, talking. हाँ जी. That's very good. We are into monologue and we keep talking to ourselves. So dialogue can really make a difference unless and until हम समदुखी के साथ बैठ रहे हैं. Otherwise हम उस चर्चा को शायद और गलत दिशा में बढ़ावा दे देंगे. हाँ जी. Pursue your hobby. Yes. Simple रहो. Great. Great. Writing journals. Excellent. Excellent. और सर ने तो 3 किताबें लिख दी है तो उनसे well, I have come up with a protocol or with my understanding, and that is cleanse, align, seed, and grow. So ये मैं तब समझी कि यार मैंने तो मतलब you name it and I have done it. I love learning and developing myself, and I'm into that dynamic since a very long time, rather since childhood. पर फिर भी इतना सब knowledge होके भी क्यों मतलब why am I still not able to experience that or why am I feeling anxious or doubtful? मैं अपने I used to love creating vision boards और फिर खुद ही उसकी date change करो, खुद ही फिर ये करो कि अरे हम क्यों नहीं achieve कर पा रहे जो चाहते हैं. So that's a trap.
So I understood that this is happening like गोबर के ऊपर मलाई. बहुत कुछ पहले declutter होना ज़रूरी है to experience that real you. And we are in the era of information overload, isn't it? So there are so many influences of Vyakti, Vastu and Paristhiti. And when we are unknowingly driven by that, जब हमारी actions, हमारे emotions, हमारे behaviors are byproduct of these influences, we are trapped. So, फिर मेरा वो पूरा टाइम क्या कर सकते हैं कम से कम टाइम में क्या कर सकते, because decluttering is very, very important. So we are going to practice a small tool, but I would, it's a little silly, but you can consider it that every time you're sitting on the toilet seat, what do? You remove your physical waste. उस समय एक intention create करके देखो कि जो भी एक मिनट पहले हुआ, if something is bothering you, एक दिन पहले हुआ, last week में हुआ, if something happened in that's, running your show, taking a lot of your energy, draining you, just create an intention that I let go of that. And when you associate it with toilet activity, it will be, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, छोड़ यार, let go, move ahead. But कोई structure नहीं होता हमारे पास, isn't it? So when you associate it, it starts happening. Every time you're brushing your teeth, you can just spit out your deep-rooted insecurities, may it be related to the area of relationship or money or career or any challenges that you would be facing in your personal or professional life. Very simple, yet I have seen that these are very powerful tools. And there are so many that as a pranic healer, we are practicing. But these are simple tools. And then coming to energy, I would like you all to experience decluttering. So are you all willing to surrender? Yes? Yeah. So अगर कुछ आपके हाथ में है, रख दीजिए. Sit tall. Keep a smile. Smile and try thinking negative. Try judging. Smile उड़ जाएगी. So that's one of the keys in my book, The Door to Confidence Opens Here. That when you smile, you automatically align yourself to a better emotion. You're less judgmental, you're more peaceful, you're more aligned. So I would love to see that smile on your face. I can see you all. So sit tall, keep that smile on your face. आँखें कोमलता से बंद. बाहर की आवाज़ के पास आपका ध्यान जाने दीजिए. All the subtle sounds which you otherwise missed. स्पीकर की आवाज़, मेरी आवाज़. किसी के मूवमेंट की आवाज़. उसे बहुत अर्थ नहीं जोड़ना है. अपने आप को कहना है कि इस आवाज़ को मैं जैसे है वैसे और जैसे नहीं है वैसे स्वीकार करता हूँ या करती हूँ. और वो स्वीकार भाव आने दीजिए. Now take your awareness to your physical body. Scan yourself head to toe. कोई अर्थ नहीं जोड़ना. Just
Accept every cell, every nerve, every muscle, every organ, every aspect of your physical body, your age, your gender, your skin color. Accept yourself exactly as you are and as you are not. This is it, and it is perfect. Take your awareness to your thoughts, your emotions. उसी भी कोई अर्थ नहीं जोड़ना, ज़्यादा कम, positive, negative. Just accept. Acceptance is the first step for transformation. मैं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जैसे है वैसे और जैसे नहीं है वैसे स्वीकार करता हूँ या करती हूँ. Take your awareness to your breathing. Are you breathing slow? Are you breathing fast? It is deep or shallow. उसे भी स्वीकार करना है. Accept all of your past. जो आज के पूरे दिन में हुआ, पिछले एक हफ्ते में, पिछले पूरे साल में, या जन्म से लेके अब तक. I can't go back and change any of my past. I can only create a powerful future. So just harmonize with all of your past. और अब let's use the power to direct our own energy for our highest good. So आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है और सोचना है कि जो भी क्लटर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का जाने अनजाने में आपने जमा किया है, वो सर से नीचे की ओर जा रहा है. So direct that energy. Just imagine a red color or a dark gray color energy going down from your head, down, 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 to your neck, to mid-back, to low back, to your legs, to your feet. Feel it. Let it go down. Let go of all the resistance. Let it go down, down, down from your feet to Mother Earth. 10, 20, 30, 40 meters down. Feel the energy. When you feel complete, one Omkara in your mind.
And now imagine yourself standing 2 feet height, happier, better, more brighter, more powerful, more relaxed, more unshakable version of you. आप पूरे विवेक के साथ निर्णय ले पा रहे हो, आप सकारात्मक व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से घिरे हुए हो, बाहर की नेगेटिविटी का आप पर कोई भी असर नहीं हो रहा है. See yourself happy, balanced, you're taking good care of your body, you're channelizing your emotions, you're being aware, you are really unshakable and your energy is full of life. अपने आप को ये कहना है, I'm not the body, I'm not the mind, I'm not my thoughts, I'm not my emotions, I'm not my past, I'm not other people's perspective of who I am. I'm not my own perspective of who I am. I'm not my labels. I am that I am. I'm the soul. I claim my own power back. Take your time. When you feel complete, very slowly, rub your hands, feel the warmth, feel the energy. बहुत compassion के साथ, act के साथ अपनी आँखें खोलना है. जिन्हें भी थोड़ी नींद लगी थी, the subconscious is always listening. So when we are taking our rituals, we are happy with people who are sleeping because उनका critical mind सच में switch off हो जाता है. तो जो बोते हैं वो सीधा अंदर. So that's in fact better. Feeling better? Yes. How many of you could feel the energy? Okay, there were a few. Yes. और अब मैं ऑनरेबल जस्टिस मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन जी मेघवाल जी को यहाँ बुलाना चाहूँगी एंड वी वुड कंप्लीट इन 5 minutes. प्लीज़ सर. सर थैंक यू सो मच. सर हमारे पास ये एक रस्सी है, आप देख लीजिए प्लीज़. ओके. आपको इसका मध्य पकड़ना है, सेंटर. Thank you so much. Well, हम सब ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कुछ देश के लोग ऐसे हैं जो हमारे इस प्यारे भारत देश के इसी तरह टुकड़े करना चाहता है, बट चाहते हैं लेकिन जब हमारी डोर अर्जुन सर जैसे, नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर्स के हाथ में हो, आप सभी जजेस यस
के हाथ में हो तो क्या ये संभव है? ऐसे कभी नहीं हो सकता। और हमारा ये प्यारा भारत देश हमेशा हमेशा इसी तरह एक रहेगा। Thank you so much, sir. इसी के साथ मैं फिर एक बार मंच पर सभी को प्रणाम करते हुए और आप सभी महानुभावों को धन्यवाद देते हुए थैंक यू फॉर रियली पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you, Dr. Pallavi Deshpande, for bringing such a thoughtful way of looking at the happiness quotient and to be utilized in our day-to-day lives. I now request Honorable Justice Vinod Kumar, Judge High Court of Delhi, for his final remarks on the topic. Before that, I would like to briefly introduce Honorable Justice Vinod Kumar. Honorable Justice Vinod Kumar, after completing his LLB in 1987 from Kurukshetra University, started practicing as an advocate in the District Court Faridabad, Haryana. His Lordship joined Delhi Judicial Service in November 1982 as Civil Judge and Metropolitan Magistrate, promoted to Delhi Higher Judicial Services as Additional District and Sessions Judge in August 2003. Then, he worked as Principal District and Sessions Judge, West and East District. He was elevated as Judge in Honorable Delhi High Court on 24 July 2025. While working as Additional Sessions Judge in New Delhi and Special Judge CBI in Rohini District Court, he had decided very sensitive and tough cases. He is known for his justice-oriented approach and calm and relaxed atmosphere during trial of many highly sensitive cases which Delhi judiciary has dealt. He has a special penchant for protecting fundamental rights of individuals while upholding the rule of law and always deciding cases without feeling any pressure at all. So far, he has overall experience of 33 years in judiciary and is before us today to address this gathering. It's our proud privilege, sir, to have a person like you who carry an illustrious 33 years of judicial experience and lot more to come. Over to you, sir. Thank you. Honorable ladies and gentlemen, honorable ladies and gentlemen of the dais and on the dais, first I would say a line for the tax bar. I had no experience of taxation laws before I was elevated to High Court. And when I came here and sat with Justice V. Kameshwar Rao and then with Mr. Justice Dinesh Mehta, I found that the tax bar was simply excellent. In fact, Justice Dinesh Mehta, who has come from Rajasthan, has repeatedly told me that it is such a nice experience that all the revenue advocates as well as SSC advocates are so well prepared that they hardly seek any adjournment. In fact, they are always ready with the instructions or their counter affidavits, rejoinders, etc. And their contribution to taxation law is no doubt is immense. So with these words, now I come to the topic. Yes, one more thing. The judgments of ITAT Delhi are also excellent. We have found legal acumen and the hard work of ITAT judges, and we may differ with them.
It is a different matter, but it is only a difference of opinion. So we are proud of ITAT Delhi as well as of the textbook. So now the issue is happiness. Madam Paul? Yeah. Dr. Pallavi and Dr. Mani have given good inputs and good information. So first, it is, can we define happiness? Perhaps it's difficult to define it. Lord, our wise persons in the world, in India as well as in the world, have tried to point out the factors which cause unhappiness. So if those factors are removed, happiness would automatically come. Mahatma Buddha traced the origin of misery in desire. Rabindranath Tagore traced the origin of misery in fear. That is why he says, where the head is held high, where the mind is without fear and head is held high, O Lord, let me nation awake. So the words are not exact, but these are like these. So Rabindranath Tagore found the cause of misery or unhappiness in fear. Then, when these are the situations, when there are some causes which cause misery or unhappiness, those causes have to be identified. William Wordsworth, a noted poet, also identified the cause of misery, and he said, word is too much with us. Word is too much with us, and we have no time to stand and stare. So we are so busy in worldly things that we have no time for ourselves. We have no time to see the nature. We have no time to connect with our family members, apne friends, our nature. You ask a child, how many planets are there? They will tell immediately Earth, Mercury, Venus, etc., etc. You ask them, have you seen them actually in the sky? Answer is no. This is the reason the happiness is missing. A child in the lap of nature, playing with the animals and the trees, would be the most happy person. This I feel. So, somehow I feel that connectivity with nature may remove miseries from us. So, what is happening? We are sitting in the office rooms, courtrooms, which are totally artificial, air conditioned. We go to our homes in air conditioned cars. We sit there in air conditioned houses and totally devoid of sunlight and fresh air. So this might be a reason for unhappiness. So when these are the things, now issue is happiness quotient and productivity. So unless we balance both, we can't be happy. I am reminded of a story. I would say this is a timeless piece of literature. Story is The Lazy Man in Workers' Paradise. This is written by Rabindranath Tagore. A lazy man dies, and due to some clerical inadvertent mistake by the office of Yamraj, he reaches to the paradise where all workers go. So what he finds, everyone is working day and night, but none is happy. So what is
what happens to that lazy man and what happens to those busy persons, you will have to read that story. It's a small story. Then there is another piece of literature which can give some insight to the issue of happiness. There is one novel, On Razor's Edge. It is written by celebrated novelist Somerset Maugham. So, the story is that the hero of the novel, he takes part in a war. Death passes through him, just scrapes through him, he is saved. And then he comes in depression. He is unable to work. He passes through big trauma after seeing so many deaths in First World War. So his girlfriend leaves him. She puts a specific question to him. Will you start working and earn money? If you are not going to earn money, I will leave you. Hero says, I love you. I want to marry you. But at this stage, at this point of time, I am not interested in earning money. So she leaves him, marries a very rich person. This situation creates further depression in the hero of the novel. The hero of the novel wanders here and there and finally reaches India. It is during that time that Great Depression happens in America. 28, 30, something like this. Big business houses fell. Her girlfriend and her husband, they are also financially broken, physically broken, mentally broken. And at that time, the hero of novel returns from India to America, brimming with health, full of energy, and full of happiness. So what was the secret? You will have to read that novel. I just came to know that our Honorable Law Minister, Mr. Meghwal, has written some books also. I will definitely read them and give him the feedback with these words. मैं एक ही बात कहूँगा, खुशी नाम की चिड़िया कहाँ गुम हो गई, नहीं मालूम। आओ हम इसे खोजें। लेकिन ये एक इंडिविजुअल की खुशी नहीं है, हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो सोसाइटी एज ए होल खुश हो, प्रसन्न हो। महात्मा गांधी ने हमें दो कंसेप्ट दिए। पहला स्वदेशी, ये बहुत गहरी बात है। हमें हर चीज़ अपनी भाषा, अपने हमारे हुनरमंद लोग, हमारे अपने कपड़े, हमारे अपने खाना, हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और दूसरी है राम राज्य। इस पर कई क्वेश्चन मार्क लगे हैं, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट इज कि रामचरितमानस में जो दिया है, राम राज्य का वर्णन जो किया है, वो ये नहीं है कि लोगों के पास सभी फैसिलिटीज़ हैं। उन फैसिलिटीज से ज़्यादा भी कुछ और है। जब तक एक मिजरी हट जाए, अगर सिर्फ causes for creating unhappiness, if these are removed, this is not enough. Much more is required. रामचरितमानस में इसका कुछ
इंडिकेशन मिलता है। एक इंटरेस्टिंगली जिसका जो बहुत क्रिटिसाइज होता है कि प्रजा में सभी लोग वर्ण आश्रम के हिसाब से चलते थे। मैं इसको मॉडर्न टर्म्स में ले लेता हूँ। ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट मस्ट वर्क विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर jurisdiction. So, this is my view. Ram Rajya is nothing but a state where every citizen is happy. Fortunately, Bhutan has shown a way. In the constitution of Bhutan, in the preamble itself, they have written that the aim of the state is to cause happiness of the people. We have taken some idea, and I have been told that state of Madhya Pradesh has also created a department of happiness. I do not know what are the achievements of that department, but a good start is a good start. If we have started from one point, I hope the whole nation will take it up and make this nation happy. Thank you. Thank you, my lord, for your kind words. I now request my lord Honorable Justice Vinod Kumar for presenting a memento and shawl on behalf of all of us to our domain expert in second session, Dr. Pallavi Deshpande. I now request all the dignitaries on the dais to release the IT80's Hindi magazine. बुलाना, okay, okay. So ये तो हो गया. Brother Pawan Singh is requested to come to the dais. हाँ वो भी. Now we come to the moment of the day where we will have the privilege of this evening to hear Honorable Shri Arjun Meghwal ji, Minister of State, Independent Charge, Minister of Law and Justice, and Minister of State for Parliamentary Affairs, Government of India, on the topic of the second session and to guide all of us the way ahead. Over to you, sir. नहीं माइक दे देंगे सर. बैठ के बोल सर. सर माइक वहाँ जाना है कि इधर देना, इधर से करो. हैप्पीनेस किधर आएगा, इधर या उधर? इधर आएगा. अभी जहाँ खड़े हैं यहाँ ज्यादा हैप्पीनेस आएगा क्या? वेरी गुड, यही है, यही हैप्पीनेस है. देखिए हम शायद गोवा में मिले थे ना, क्यों सब? वहीं पे ये तय हुआ था. अपन प्रोग्राम क्या था गोवा में, कोई आइडिया किसी को है? हाँ मून, उसका प्रोग्राम का नाम क्या था? मंथन नहीं, सहस्त्र चंद्र दर्शन. हाँ यही था ना, कि जिसने 1000 चंद्रमा देख लिए हों. उस समय IT-18 ने 1008 देख लिए, लेकिन 1000 से ऊपर जिसने चंद्रमा देख लिए हों, वो प्रोग्राम का नाम है सहस्त्र चंद्र दर्शन. 1 महीना में कितने होते हैं चंद्रमा? 12. ठीक ही है ना? जादू से नहीं बढ़ता, 3 साल में एक बढ़ता है.
तो आप गिनते जाओ, 81 के आसपास जब आदमी की उम्र होती है, 81 क्रॉस होने के बाद 999 करीब चंद्रमा वो देख लेता है। तो 81 के बाद जो लोग 82, 83, 84 के होते हैं, तो इनके बदंग साहब के दफ्तर में एक इंदौर का कोई कलाकार था, उसने इनको ज्ञान दिया कि हम 1008 चंद्रमा के साथ हम सहस्त्र चंद्र दर्शन का एक कार्यक्रम करेंगे। वही किया था आपने, वही था ना महावीर जी, वही और कोई था? तो वहाँ ये तय हुआ कि एक कार्यक्रम हैप्पीनेस का भी करना चाहिए। चंद्रमा का संबंध हैप्पीनेस से है, इसलिए ये कार्यक्रम किया, और कोई हमारा हंगामा खड़ा करना कोई मकसद नहीं है। हैप्पीनेस से चंद्रमा का संबंध है। और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सीबी भडंग साहब, प्रेसिडेंट आईटीएटी, हमारे जस्टिस दिनेश मेहता जी, जज दिल्ली हाई कोर्ट, हमारे जस्टिस विनोद कुमार जी, जज दिल्ली हाई कोर्ट, हमारे राजीव मनी जी, लॉ सेक्रेटरी हमारे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हमारे महावीर सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट आईटीएटी दिल्ली ब्रांच, हमारे आरएस आहूजा जी, वाइस प्रेसिडेंट आईटीएटी बार, अब तो प्रेसिडेंट बन गए ना आप, वाइस ही हो गया वाइस प्रेसिडेंट। वो हैप्पी रहने के लिए भी तो ठीक ही है ना, क्या है हैप्पीनेस छोड़ते नहीं ना। अजय बदवा जी कहीं गए हैं आज, कह रहे थे, फोन आया था कि कहीं मैं गया हूँ, तो मैंने कहा आज हम प्रेसिडेंट बना दें इनको, क्या हाँ बना दो। तो प्रेसिडेंट आईटीएटी बार एसोसिएशन डॉक्टर पल्लवी देश पांडे, ये नासिक से आई है, सब जोरदार ताली बजा सकते हो आप। चेहरे से भी खुशी झलकती है ना। हाँ, नहीं हंसने में पता नहीं अपन क्यों कंजूसी करते हैं। बजट लगता है क्या? नहीं लगता ना। हाँ, लेकिन हर जगह नहीं हंसना, जहां आवश्यक है वहां हंसना है, उससे भी हैप्पीनेस आती है, बॉडी में भी आती है, अपने विचारों में भी आती है। हमारे संचालन करने वाले मेंबर आईटीएटी दिल्ली से हैं बाल गणेश जी, आपको भी नमस्कार, सबको नमस्कार, जितने आप सब लोग आए हैं। देखिए 3-4 विषय आए, उनको मैं टच करने की कोशिश करूंगा। राजीव मणि जी, आपने कब बुद्धा को और 4 वाक्य सब पढ़ लिए, जनक है? ये 2 हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं आजकल, सेक्रेटरी लॉ भी हैं, और एक हमारा डिपार्टमेंट होता है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, जहाँ ड्राफ्टिंग का काम होता है। सपोज करो कोई बिल आया होम मिनिस्ट्री से, अब उसमें ड्राफ्टिंग में कहीं एरर रह गई है, कोई शब्द आगे लगाना है, कोई पीछे लगाना है, कोई बीच में क्या जोड़ना है, ऐसा बड़ा टिपिकल सा काम है। इसमें इनको जनक याद आ गया, चारवाक भी याद आ गया इनको, और बुद्धा भी आ गया। बाकी मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन बुद्धा के लिए एक शब्द कहूंगा कि एक शिष्य उनका प्रवचन सुनने जाता था, और वो उनसे बाद में प्रश्न करते थे। बुद्धा की नेचर थी, लॉर्ड बुद्धा की, कि वो प्रश्नों का जवाब कम देते थे, और अगर कोई प्रश्न स्पिरिचुअल है तो चुप रहते थे, और अगले को भी कहते थे भी उत्तर मिल जाएगा आपको। जैसे जनक वाले मामले में राजीव मणि जी ने उत्तर दिया एक कहानी से, तो फिर भी वो माना नहीं। तो बुद्धा ने पूछा भाई क्या चाहते हो आप? तो उसने कहा आई वांट हैप्पीनेस। ये बहुत फेमस कोट है लॉर्ड बुद्धा का। तो फिर बुद्धा बोलते हैं फर्स्ट यू रिमूव आई मीन्स ईगो। हमारे पास भी है ना, का नहीं है तो सही ना। हाँ, लेकिन हमारी पत्नी भी कहती है कि ईगो कम करो, तो क्या क्यों है? करना चाहिए ना वहां, तो नहीं। तो लॉर्ड बुद्धा कहता है कि फर्स्ट यू रिमूव
I means ego. Then you desire, I want, so I. Want means desire, unnecessary desire. You remove want also. Then you left with happiness only. बहुत सिंपल सा जवाब, लेकिन उपयोगी जवाब, अच्छा जवाब। ऐसे सिंपल जवाबों से हम लोगों में खुशी बांट सकते हैं, जैसे विनोद कुमार जी अभी बांट रहे थे हमारे जस्टिस साहब। आपके पास भी ऐसी कुछ चीजें, लेकिन आप बांटते ही नहीं हो। अब एक कहानी कह दूं मैं बदन साहब। एक आजादी से पहले एक ठेकेदार था। ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी है। मैं नॉवल और इन चीज़ों में तो ज़्यादा इंटरेस्टेड मेरा नहीं रहता है, लेकिन पुरानी किताबें, स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह में पढ़ता रहता हूँ। तो आपने जब एक कहानी कही तो उससे मुझे वो कहानी याद आई। रमन महर्षि के कहीं लिटरेचर में आता है। तो एक ठेकेदार था पटना के आसपास, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और उस ठेकेदार के काम लिया था उसने कोई रेलवे का। एक अंग्रेज अफसर था, उसने कहा भाई ये क्यों नहीं आ रहा है ठेकेदार, मैं 4-5 दिन से बुला रहा हूँ। तो अब उस समय टेलीफोन तो होते नहीं थे ज़्यादा, टेलीफोन आ गए थे लेकिन ज़्यादा नहीं होते थे। उन्होंने कहा तार भेज देते हैं साहब उसको आने के लिए। अब उसने तार भेजा तो उसने सूचना तार से ही दी कि मेरे फादर की डेथ हो गई है। तो 1-2 दिन और इंतजार किया उसने, अंग्रेज अफसर ने। उसने कहा भी ऐसी फादर की डेथ हो गई तो क्या हो गया, हमारा काम सफर कर रहा है ना, उसको आना चाहिए। अब वो कहे साहब फादर की डेथ हो गई, तो किसी ने कहा साहब 12 दिन तो नहीं आएगा, किसी ने कहा 13 दिन नहीं आएगा, वो तो साहब 15 दिन के बाद भी नहीं आया, 20 दिन के बाद भी नहीं आया। फिर वो उस समय एक परंपरा थी, आजकल पता नहीं परंपरा है या नहीं है, 1.25 महीने के बाद एक घड़ा भरा जाता था। है क्या परंपरा महावीर जी, थानेट है जानो उनते है तो 1.25 महीने के बाद आया, उस घड़े को भर के आया। तो वो ठेकेदार बहुत नाराज, वो सर अंग्रेज अफसर बहुत नाराज हो ठेकेदार से। उन्होंने कहा साहब क्या हुआ, मेरे फादर की डेथ हुई थी, काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ज्यादा लेबर लगा के कर दूंगा, लेकिन आप इतने। बोला यार फादर की डेथ में इतना समय क्यों लगाया, फिर भी पार नहीं पड़ी। तो वो कवि था जो ठेकेदार था, उसने कहा साहब हमारी कल्चर अलग है और आपकी कल्चर अलग है। बोला क्या फर्क पड़ा, हम आप पे राज कर रहे हैं, आपकी ऐसी क्या कल्चर है। लेकिन वो ठेकेदार तो था, लेकिन वो अपनी देश की कल्चर और सभ्यता के प्रति बहुत जागरूक था। उसने कहा आप राज कर रहे होंगे हमारे पे, लेकिन आपकी कल्चर श्रेष्ठ नहीं है, हमारी कल्चर श्रेष्ठ है। अब विवाद हो गया, बड़ा विवाद हो गया। बाद में वो ठेकेदार जाके रमन महर्षि का शिष्य बना। रमन महर्षि का आश्रम साउथ में कहीं देखा किसी ने, अच्छा आश्रम है, आपने देखा होगा, तमिलनाडु में ना, हाँ तमिलनाडु में। तो उसने काफी बहस की, उसने कहा मैं आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दूंगा। बोला कर दीजिए, मैं मेरे कल्चर के विरोध में नहीं सुनूंगा। आप ठीक है राज कर रहे होंगे हमारे ऊपर, लेकिन मैं मेरी कल्चर महान है। तो किसी ने सलाह दी साहब क्यों आप रद्द ही कर दो ना, लेकिन वो अफसर बोला यार ठेकेदार तो अच्छा है। ये आता है इंट्रोस्पेक्शन से। वो गया, जैसे अभी पल्लवी जी ने ध्यान कराया, वो ध्यान व्यान तो नहीं किया, उसने देखा मैंने ज़्यादा बोल दिया ठेकेदार को, क्या हुआ, तो फिर बुलाया। ठेकेदार ने कहा साहब आप हमारे अफसर हो, मैं सब मानता हूँ, आप हमें जो कहना कहिए, आपका काम खराब है, पैसे काट लेंगे, लेकिन हमारी कल्चर को आप बदनाम मत करिए, हमारी कल्चर खराब है ये मत कहिए, ये हमारे लिए गाली है। तो बोला ऐसा है क्या कल्चर में आपके, तो उसने एक लाइन लिखी 2, और उससे वो अंग्रेज अफसर प्रभावित हो गया। वो लाइनें हैं कहीं किसी बुक में, कभी महावीर जी आपको मैं दे दूंगा। उसने कहा हमारी कल्चर क्यों महान है, आपका यहाँ उसको समझाता। ठेकेदार देखिए, ठेकेदार है और वो अफसर है बड़ा, वो कैंसिल भी कर सकता था, उसका रेलवे का काफी कोई पटरी बिछाने का काम था। वो कहता आपके देश में डिप्रेशन, उस समय भी डिप्रेशन था जी ब्रिटेन में, ध्यान है, लोग डिप्रेशन में जाते थे, आज भी है,
बोला आपके देश में डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, हमारे देश में कम है, हम चाहे गरीब भी क्यों नहीं हो, लेकिन डिप्रेशन की प्रॉब्लम हमारे यहाँ कम है। तो उन्होंने कहा क्या कारण है? तो वो कवि था, ठेकेदार, वो समझाता है और उसको अंग्रेजी में भी करके देता है, लेकिन मैं आपको जो समझाता हूँ उसको शायद पल्लवी जी समझ जाएंगी। बोला हमारे यहाँ अगर खुशी होती है तो अभी हम बांटते हैं, और हमारे यहाँ कोई गम होता है या दुखी होती है तो अभी हम बांटते हैं। और अगर किसी जवान लड़के की डेथ हो जाए और वो अकेला ही बैठा रहे घर में तो डिप्रेशन आएगा, आपकी सोसाइटी में आता है। मेरे फादर थे, मेरा अटैचमेंट था, तो मैंने सारे संस्कार किए। तो मेरे भाइयों ने कहा कि आप सबसे बड़े हो तो एक 1.25 मणे का घड़ा भरा जाता, वो संस्कार भी करके जा सकते हो क्या? बोला हाँ मैं जाऊंगा। तो मैं वो इसलिए मैं 1.25 महीने तक आपको नहीं आया। तो उसने लिखा जो बहुत एक आप उसको सूत्र कह सकते हो जीवन का, दुख घट जाता, दुख घट जाता, सुख बढ़ जाता यदि वो बंट जाता। अभी पल्लवी जी कहीं किसी को पूछ रही थी भी आप कभी तकलीफ में हो, स्ट्रेस में हो तो क्या करते हो, तो यहां से कोई आवाज आई कि मैं मेरे दोस्तों से बात करता हूं। आपने ही कहा था ना? किसने कहा था? हाँ तो इनके ताली बजाओ भी जोरदार, ऐसे नहीं। क्या नाम है साहब? विजय गुप्ता जी के लिए जोरदार बजाओ भैया। अच्छा क्या इसमें दिक्कत क्या है बताओ? बांटना और कुछ नहीं है। स्ट्रेस तो आदमी है तो स्ट्रेस आएगा साहब। यू आर ह्यूमन बीइंग ना? का नहीं, ह्यूमन बीइंग ही हो ना। आपके पास शरीर है या नहीं है? इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम है सर आपका? नहीं, शरीर पीछे है, पीछे। हाँ है। मनीष अग्रवाल जी के लिए भी बताओ भाई। क्या परिभाषा शरीर की बताइए? 5 हमारे पास ज्ञान इंद्रियां हैं, है या नहीं है बताओ? अगर आपको पास रख दिया जाए नमक, सफेद ही होता है, चीनी सफेद ही होती है ना, लेकिन ये खारा है या मीठा कौन बताएगा? टंग, जीभ। ये इसलिए हमारे ऋषियों ने उसको ज्ञान इंद्रिय कहा। हमारे माँ ने बताया होगा, गुरु ने बताया होगा कि भाई ये पेड़ है बेटा, नीम का है, और हमने भी हमारे जनरेशन को बताया ये नीम का पेड़ है, तो कहीं से तो मिला होगा ना। किससे थ्रू? आंख के थ्रू। इसलिए आंख हमारी क्या हुई? ज्ञान इंद्रिय हुई। किसी घर आप बुलाओगे, हलवा बन रहा है तो पता चल जाएगा यार ये घर तो ठीक ही जगह है, हलवा बन रहा है। कहां से पता चला? नाक से। एक और भजन साहब हम एक जगह चले गए खाने के लिए बॉम्बे में। इन्होंने कहा यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करें? तो मैंने कहा क्या हुआ? कि अगर कोई सब्जी बना रहा है तो कोई छौंक तो लगनी चाहिए ना, पता। नाक से पता नहीं चला, और बाकी ऐसे हुआ कुछ बनाया ही नहीं उन्होंने, ऐसे ही बुला लिया। तो ये कहां से पता चलता है? ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, लेकिन बहुत कोऑर्डिनेशन है जी। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। जैसे आप बाथरूम में गए, बाल्टी भरी हुई है, बकेट आपकी भरी हुई है, आपको उठाना है। आपकी आंख ने देखा, आपको ज्ञान हो गया कि बाल्टी है भरी हुई है, उठाना है, लेकिन आंख तो नहीं उठा सकती ना। कौन उठाएगा? हाथ। तो इसको हमारे ऋषियों ने कहा ये कर्म इंद्रिय है। चल के आना है, कौन चलेगा? लेकिन कोऑर्डिनेशन है। तो 5 हमारे पास क्या हुई? ज्ञानेंद्रियां। और 5 हमारे पास क्या हुई? कर्मेंद्रियां। मनीष जी आपके लिए कह रहा हूं, शरीर है ये, शरीर के ही पार्ट है। और एक हमारे पास हुआ मन। अब शरीर को सुख देना है, आपको हैप्पी रखना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? खाना खाना पड़ेगा। अगर सर्दी लग रही है तो कपड़े ओढ़ने पड़ेंगे, कोट पैंट पहन का ही हो ना, सर्दी है ना इसलिए। और अगर गर्मी है तो एसी चलाना पड़ेगा, पंखे चलाना पड़ेगा। ये शरीर का सुख है जी, ये शरीर का सुख है, ये होगा ही
नहीं तो शरीर तकलीफ में होगा तो हम जो हमें मेडिटेशन करना है या आगे हमें आत्मिक सुख लेना है वो नहीं मिल सकता ना। अगर बीमार होंगे तो आप इसमें आते ही नहीं, इसके इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। इसलिए शरीर से आपको सुख भी बढ़ाना है और हेल्दी भी रहना है, जिसके लिए आप जिक्र कर रहे थे कि कोई ट्रायल के लिए कोई नोटिस आ गया, आपने इग्नोर कर दिया तो फिर समझ नहीं आएगा ना अरेस्ट का। यही कह रहे थे ना आप। तो आपके शरीर में कुछ छोटी मोटी कमी है और कोई नोटिस आया ट्रायल का, ITAT का नहीं, किसी का भी आ सकता है, तो आपको उसको सीरियसली लेना है। तो आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हुई, 5 आपके पास कर्मेंद्रियां हुई, उनका कोऑर्डिनेशन है, ध्यान रखना है सबको, इनको ठीक भी रखना है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को। और एक हुआ मन। मन हमारे ऋषि मुनि कहते हैं 2 तरह के होते हैं। एक है फिजिकल माइंड जो हमारे इंद्रियों से जुड़ा हुआ रहता है, और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो हम कर्म करते हैं वो उसमें स्टोर होते रहते हैं, जिससे हमारा भाग्य बनता रहता है। ऐसे मन भी हुआ, मन में थिंकिंग आती है, विचार आते हैं। इस प्रोग्राम में आपको जाना था तो आपके शरीर में कोई एक अंग है जिसने निर्णय किया नहीं ITAT का प्रोग्राम तो अच्छा हैप्पीनेस का जाना चाहिए। किसने किया? बुद्धि ने। तो आपके पास शरीर भी है मनीष जी, आपके पास मन भी है या नहीं है बताओ? और आपके पास बुद्धि भी है और आपके पास आत्मा भी है। इससे आपका शरीर बना। अधिकतर लोगों ने कहा कि 4 पार्ट पे कोई विवाद नहीं है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल, और ये सबका सुख मिलता है। मैं एक जगह, बदन साहब, मैं एक जगह एक जिले में कलेक्टर था, तो मैं ये पढ़ा रहा था, मेरी आदत है पढ़ाने की। तो उन्होंने कहा साहब गांव का आदमी कैसे फिर बुद्धि का तो वो कोई सुख लेता ही नहीं है। तो मैंने उनको समझाया, मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने उनको समझ, बड़ी अच्छी क्लास थी और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे। मैंने कहा नहीं, गांव का आदमी भी बुद्धि का सुख लेता है। बोला कैसे? मैंने कहा साहब एक बार मैं देखने गया कि इस गांव में पानी आता कि नहीं आता है, वाटर सप्लाई को। तो मैं एक गांव में, आपने देखा होगा एक गट्टा होता है पीपल का, कुछ लोग बैठे रहते हैं, देखा है क्या आपने गांव? हाँ, ताश खेल रहे थे चौपाल। तो मैं वहां चला गया। अब वो मेरे से बात नहीं कर रहे, पर मेरी गाड़ी देख के भाई आदमी तो ये बड़ा है। तो फिर किसी ने कहा लाल बत्ती की गाड़ी आई है, कौन आ गया? मैं भी बैठ गया। मैंने कहा भाई मुझे पूछना है पानी की सप्लाई के लिए, थोड़ी देर बैठो। उनके कोई 1-2 साल बाकी थी शायद। महावीर जी समझते हो ना? तो एक आदमी के जिसके बनियान बिल्कुल फटी हुई थी, उसने जोर से कहा आप कुछ भी हो, आप बैठो थोड़ी देर, आपको 5 मिनट बैठना पड़ेगा। मैं बैठ गया भाई, अब क्या करें? अब बनियान भी फटी हुई थी, लेकिन उसके पास हुक्म का एका था। अब ये मुझे पता नहीं था। किसी एक के पास हुक्म की बेगम थी। जैसे ही उसने बेगम चली और उसने साहब जोर से हुक्म का एका चला, इतना खुश हुआ कि मुझे पता था कि तेरे पास बेगम है और मेरे पास एका मैं मारूंगा। तो बुद्धि का सुख तो वो गांव वाला भी लेता है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि नहीं लेता है। आप ही ले तो ऐसा नहीं है, आप ले तो ऐसा नहीं है, सब लेते हैं। जिसके पास शरीर है, जैसे मनीष जी ने कहा शरीर है, पता तो चला ना कि है भाई। अब इसके अंदर एक आत्मा भी है। अब ये कुछ ऋषियों ने, मुनियों ने कहा आत्मिक सुख भी होता है। कई लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो होता ही नहीं है, ये तो भारत के ऋषि मुनि ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि आत्मिक सुख भी होता है। क्या? जैसे एक छोटा बच्चा रो रहा है, मां को पता चलता है कि ये रो रहा है, तो मां ने उसको गोदी में उठाया, स्तनपान कराया। तो वो ऋषि कहता है कि मां के शरीर से दूध निकल रहा है, लेकिन रोता हुआ बच्चा जब दूध पी रहा है तो वो शांत हो गया, वो मां को आत्मिक सुख मिल रहा है। आपने वेरी गुड कहा, ताली बजाओ भाई इनके लिए। क्या हम कोई मानवता भाई की सेवा करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फिकेशन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या है सेल्फ? आत्मा ही है साहब, दिखती नहीं है तो क्या हुआ, अंदर है तो सही ना। क्यों मनीष जी, शरीर में है ना। यही हैप्पीनेस का विषय जी। आज एक विषय और आया
एक विषय आया नेचर के साथ, आपने रखा विनोद जी ना, नेचर के साथ, तो गोवा में आपने चंद्रमा के साथ प्रोग्राम किया। एक मैं प्रोग्राम करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क दी मुझे क्या दी, देश को ही दी थी। जब वो एक बार पेरिस एग्रीमेंट के लिए बाहर गए तो वहाँ खाना खा रहे थे, तो एक शब्द उन्होंने सुनाई दिया कि भाई कुछ भी हो, इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज कार्बन एमिशन। तो उनको पीड़ा हुई, उन्होंने जाके उस राष्ट्राध्यक्ष को कहा कि भाई आप ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों परसेप्शन है, कि नहीं हमारे यहाँ काफ़ी डिटेल में चीज़ें आती है कि इंडिया कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सो मोटो एक्शन लेता ही नहीं है। बोला हम तो उस देश के वासी हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात बैठ गई कि ये राष्ट्राध्यक्ष भी खराब आदमी नहीं है। ऐसा क्यों कहा? तो वन और पर्यावरण मंत्रियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सो मोटो एक्शन ले सकते हैं क्या? हम जब हमारे पोते होंगे, पड़पोते होंगे, उनको धुआं रहित वातावरण देना चाहते हैं या धुआं सहित वातावरण देना चाहते हैं? तो सब विज्ञान भवन में था सम्मेलन, सबने कहा धुआं रहित। तो धुआं रहित वातावरण देना चाहते हैं तो आपको सो मोटो एक्शन लेना पड़ेगा। क्या आप सप्ताह में एक दिन साइकिल से जा सकते हो? तो आपने देखा होगा कि मुझे साइकिल मैन भी कहते हैं। क्यों बदन साहब कहते हैं ना, आपने मेरे घर पे साइकिल देखी भी है। मैं मेरे पार्लियामेंट विदाउट फेल 2 साल पार्लियामेंट से घर, घर से पार्लियामेंट साइकिल से ही गया। अभी भी साइकिल हम प्रयोग में लेते हैं, प्रेरणा देने के लिए। दूसरा एक काम उन्होंने कहा जो विनोद जी ने, हमारे जस्टिस विनोद जी ने कहा, उसी से संबंधित था कि मैंने कुछ यंग जनरेशन के लोगों को देखा कि वो अर्थ डे पे, साल में एक बार होता है अर्थ डे, उसमें वो घर की लाइट बंद करते हैं, 1 आवर इज 0 आवर, उसको सेलिब्रेट करते हैं और कार्बन एमिशन कम करने का एक मैसेज देते हैं। बोला हम इसके खिलाफ नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भी करिए आप, लेकिन अगर मैसेज देना है तो सही मैसेज क्यों नहीं दे सकते? हम चंद्रमा को क्यों नहीं दे सकते? हम पूर्णिमा के दिन अगर चंद्रमा को देखेंगे, लाइट घर की नहीं हो जली हुई, तो शीतलता भी हमें मिलेगी। फिर हम एक प्रोग्राम करने लग गए जिस प्रोग्राम का नाम है एक रात चांद के साथ। वो हर पूर्णिमा को हम करते हैं, एक रात चांद के साथ। जब हम साउथ में गए, मैं इलेक्शन इंचार्ज था पांडिचेरी का, वहाँ हमने करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आपने जो बैनर लगाया है ये तो हिंदी में लिखा हुआ है। तो मैंने उसका नाम अंग्रेजी में कर दिया, 1 नाइट विथ मून लाइट। और फिर वो प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा क्या होगा? तो हमने समझाया कि आप चंद्रमा को देखिए, फुल मून है, खीर बनाइए, जो चंद्रमा की किरणें होगी वो खीर पे पड़ेगी, और आप अगर खीर खाएंगे तो आपके मन में शीतलता आएगी, क्योंकि चंद्रमा का संबंध सीधा मन से है या नहीं है बताओ? तो तमिल में भी बहुत भजन है चंद्रमा पे, गाने भी है। तो शुरू में तो उनको अटपटा लगा, लेकिन प्रोग्राम चला तो पता है आपको कितने बजे तक चला? 4 बजे तक प्रोग्राम चला तमिल में, 4 बजे तक। और उसमें एक शानदार उपलब्धि हमारी हुई कि उनमें एक लड़की थी जो उसने कहा ये प्रोग्राम मुझे अच्छा नहीं लगता, वो चंद्रमा को देखने के लिए बैठ गई। और उसके बाद वो डॉक्टर है खुद जिसके घर में प्रोग्राम हुआ, उसने मुझे कहा मंत्री जी आपने क्या किया मेरी लड़की के साथ? क्या हुआ? मैंने कहा कि उसके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी डिप्रेशन की, वो ठीक हो गई। मैंने कहा वो चंद्रमा देखने से, वो मैंने कुछ नहीं किया। तो जो आपने कहा नेचर के नजदीक रहेगा वो डिप्रेशन में नहीं आएगा भाई साहब। आप देखिए सूरज उग रहा है, आपके लिए उग रहा है भाई,
उगते हुए सूरज को आप देख नहीं सकते क्या? नदियां बह रही है, आपके लिए बह रही है जी। पहाड़ आपके लिए ही वनस्पति पैदा कर रही है। पठार, पहाड़, नदियां, पेड़, उनको देख क्यों नहीं सकते आप? ये नेचर है। जैसे ही आप देखोगे आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाएंगे, और जैसे ही कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाएंगे आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। वो लेवल बढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि आप में हैप्पीनेस है नहीं। मैं कई बार जाके घरों में कहता हूं, एक जगह मैं गया खाना खाने, कई जगह तो बदंग साहब के साथ भी चला गया। एक जगह गया, खाना बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उनके पतिदेव अपनी पत्नी को क्या कहते हैं? अब मैं बधाई दे रहा हूं उसको, खाना बहुत अच्छा बनाया, वो क्या कहते हैं? नमक कम डाला तेने ना। अरे क्या, अरे यार मैं बात ही नहीं कर रहा हूं नमक की। आप इतना अच्छा खाना बनाया पत्नी ने, आप उसकी बड़ाई क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हम क्या करेंगे? उसकी नुक्स निकालेंगे। वहीं हैप्पीनेस कमजोर हो जाती है। बड़ाई करना सीखो। सीखोगे क्या आज से? पक्का है? पक्का है? सीखे हुए भी हैं, बधाई इनके लिए, ताली बजाइए इनके लिए। यही प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम है कि हम एक दूसरे से सीखें। पत्नी भी हमारी फ्रेंड होती है जी, और पत्नी के लिए पति फ्रेंड होता है जी। हम एक दूसरे से सीखें। क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता जी ने अच्छा कहा, हम एक दूसरे के लिए सीखें। मंच आपसे सीखें, आप मंच से सीखें, एक दूसरे से सीखें। और अगर कोई तकलीफ आ जाए, स्ट्रेस आपके जीवन में आ जाए, तो उसको बांटना भी सीखें। यही हैप्पीनेस है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Thank you, Honorable Minister, for your very kind words of wisdom in your inimitable style, with a lot of sense of humor, and also communicating the essence of the topic chosen today very, very lucidly. I now request Shri C.N. Prasad, Honorable Judicial Member, ITIT Delhi Zone, to propose formal vote of thanks for this session. Thank you, Brother Balaganesh. It is a privilege to stand here in this august gathering for proposing a formal vote of thanks on this occasion of 85th Foundation Day celebrations of our ITIT. I thank Honorable Law Minister Shri Arjun Meghwal for sparing out his valuable time on the eve of Republic Day celebrations. Honorable Minister, sir, has always been available to guide us and encouraged us to perform our duties in accordance with our motto of ITIT, Sulabh, Satwar and Nispaksh Nyay. I thank Honorable Justice Vinod Kumar, Judge, High Court of Delhi, for helping us to meet Honorable Justice Dinesh Mehta and guide us and to preside over the second technical session today. I thank Honorable Union Law Secretary Shri Dr. Rajiv Mani for his gracious presence, and here I also like to thank senior officers of Ministry of Law and Justice who have made it convenient to be present in the celebrations. I thank Shri R.S. Ahuja, Vice President, Delhi ITIT Tax Bar Association, and his team of executive members for their support in the smooth conduct of these celebrations. I thank officers of the department, Income Tax Department, and other guests present on this occasion. I thank Dr. Pallavi Deshpande for her meaningful presentation, which I hope will help all of us in increasing our productivity at work. I thank the support staff of the Civil Services Officers Institute for making available this auditorium and providing us all the necessary infrastructure facilities. Thank you, one and all. Let us all now rise for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I now request all the dignitaries on the dais to make themselves comfortable on the sofas for our forthcoming cultural event. And I hand over now the proceedings to Brother Amitabh Shukla. हेलो पीछे करें विशाल कर्टन आपके पास आ नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। मैं हूं अमिताभ शुक्ला, अकाउंटेंट मेंबर ITAT, और अब हम चालू करेंगे आज की इस सभा का दूसरे पड़ाव पे पहुंचे हैं। एक सांस्कृतिक सभा होगी और आप सबसे बस गुजारिश है कि अपनी सीट पे बैठ जाएं, क्योंकि अब बैठने के बाद आपको दोबारा जल्दी से उठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला प्रोग्राम बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत ही मनोरंजक होने वाला है। बस हमको 5 मिनट का समय चाहिए बैक स्टेज के ऊपर कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करें ताकि हमारे कलाकार अपना स्थान बना सकें। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी रोचक कार्यक्रम, मनोरंजक कार्यक्रम होने वाले हैं। नृत्य है, संगीत है, गायन है, और एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप में से किसी ने कल्पना नहीं की होगी। मेरा दावा है कि वो एक चीज़ ऐसी है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। मैं अभी उसके बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि चूंकि आपने कल्पना नहीं की है, तो मैं चाहूंगा कि आप स्वयं देखें। थोड़ा सा समय
अभी नहीं आ रहा है यार, कौन आ रहा है इसको? नहीं आ रहा सर। अरे इधर आओ, इधर आओ, अभी कुछ नहीं है, तुम लेके जाओ। आओ उधर लेके जाओ, उठाओ इसको पीछे 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 करो। अच्छा हेलो, परम आदरणीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, न्यायाधीश श्री दिनेश मेहता जी, न्यायाधीश श्री विनोद कुमार जी, श्री चंद्रकांत भड़ंग प्रेसिडेंट ITAT, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली बेंचेस श्री महावीर सिंह जी, दिल्ली ITAT के माननीय राजस्व एवं लेखा सदस्य, ITAT रेवेन्यू बार के माननीय सदस्य, हमारे साथ इस समय भारी संख्या में जुड़े हुए वर्चुअली ITAT परिवार के सारे माननीय सदस्य, देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका ITAT के 85th फाउंडेशन डे के इस स्वागत समारोह, इस समारोह में फिर से स्वागत है। अब हम अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचे हैं। आज की सांस्कृतिक संध्या को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मां सरस्वती को समर्पित इस सांस्कृतिक संध्या को प्रारंभ करने से पहले मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री मेघवाल जी से, श्री जस्टिस मेहता से, जस्टिस विनोद कुमार जी से, लॉ सेक्रेटरी श्री राजीव मनी जी से कि कृपया स्टेज पर आएं। महावीर सर, अगर आप सबको गेस्ट को ले आएं दीप प्रज्वलन के लिए सर। जी सर, यही पे और जादू का भी है ना, सब कुछ यही। दो बच्चियों का सर नृत्य भी है, दो बच्चियों का भरतनाट्यम का नृत्य भी है।
धन्यवाद सर। पृथ्वी, जल, गगन, अग्नि, समीरा, ये 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। पृथ्वी माता हमको स्थिरता देती है, हम सबको एक आकार देती है। इसी भावना के अंतर्गत आज की हमारी पहली प्रस्तुति है माँ पृथ्वी को समर्पित एक वंदना। इसको प्रस्तुत करने जा रही हैं सानवी योगेश पुजारी और आणवी योगेश पुजारी। ये दोनों हमारे ब्रदर योगेश पुजारी की होनहार डॉटर्स हैं और पिछले कई साल से भरतनाट्यम की सेवा में समर्पित हैं, सीख रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं। ये प्रियदर्शनी वासुदेव इनकी टीचर हैं जो भरतनाट्यम इनको सिखा रही हैं। सानवी की उम्र मात्र 16 साल है और आणवी की उम्र मात्र 11 साल है। तो आपकी अगर जोरदार तालियां बजेंगी तो इनका उत्साहवर्धन होगा आज का प्रोग्राम देने में। तो पहला है पुष्पांजलि प्रस्तुत करने जा रहे हैं सानवी और आणवी के द्वारा।
विशाल पर्दा बंद कर दे। That was indeed a mesmerizing performance. मैंने बताया था ये नृत्य पृथ्वी माँ को समर्पित है। आणवी का मतलब होता है पृथ्वी माता, सानवी का मतलब है लक्ष्मी की देवी। तो ये दोनों के, मैं जिज्ञासुक था कि इन दोनों के नाम के मतलब क्या होते हैं, तो ये हैं उनके मतलब। अगली प्रस्तुति से हमारी है समर्पित महादेव शिव शंकर को। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवामी सहितम नमामि। शिव हर चीज़ में मौजूद हैं। शिव आदि हैं, शिव अंत हैं, शिव नाद्य में हैं, शिव वाद्य में हैं, शिव सुर में हैं। अगली प्रस्तुति जो हमारी है वो समर्पित है शिव को। इसे प्रस्तुत करेंगी सानवी। यह शिवकृति राग रेवती में आदि ताल के ऊपर आधारित है। इसका म्यूजिक कंपोज किया है तंजावुर अय्यर शंकर जी ने और डांस कंपोज किया है गुरु बी भानुमति ने। जोरदार तालियों से स्वागत करें फिर से सानवी का, जो प्रस्तुत करने जा रही हैं शिव स्तुति। शिवाय नमः। महादेव शिव शंभो। महादेव शिव शंभो। श्री महादेव शिव शंभो। श्री महादेव शिव शंभो। श्री मारकोटि सुंदर प्रभो। महादेव शिव शंभो। श्री मारकोटि सुंदर प्रभो। श्री महादेव शिव शंभो। धीम धीम तक धीम धीम तक धीम तरिगिट तक तरिगिट तक तरिगिट तक धीम सहस्र कोटि जनपालना। सहस्र कोटि जनपालना। साधु संरक्षणा पावन। साधु संरक्षणा पावन। तटवंजन सकल सुरासुर संनुत पाद। किंकिणी झम झम झण 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 नूपुर लय गति कण 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 विधि हरि सेवित साधु संरक्षणा पावन। साधु संरक्षणा पावन। महादेव शिव शंभो। श्री मारकोटि सुंदर प्रभो। श्री महादेव शिव शंभो। सर्वेश्वर करुणाकर मूर्ते। सर्वेश्वर करुणाकर मूर्ते।
शशिरविभूषित परमेश्वर गंगाधर कीर्ते पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते प्रधीं धीं धीं तरूप भयंकर ढमरुग हस्त तृतीय सत सदीक्षित नाथ नटेश कबुत्वं तक तक तां दिगि दिगि तै तक दिक्कु ता किट्ट तुं किट किट तकिडं तुं किट किट तकिडं किन्नं किट तक दिक्कु तां तत्तां पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन तारित झेम 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 तक तक तयित 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 तक तक तयित 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 तक 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 दीं दीं दिनसंतरित तक 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 महादेव शिव शंभो श्री मारकोटि सुंदर प्रभो श्री महादेव शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः Hello. That was indeed mesmerizing. विशाल पर्दा। किसी भी आर्टिस्ट को पैसे कौड़ी से ज़्यादा उसके सम्मान, उसके नाम की ललक होती है। हम चाहेंगे कि सर प्लीज़ एक बार आप स्टेज पे आके इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दें और हमारा एक स्मृति चिन्ह दें। सर आप सर को ले आए सर, आ जाइए सर। नहीं थैंक यू, बहुत अच्छे सर। सर हमारे मेंबर हैं योगेश पुजारी, उनकी बेटी है जी, उनको भी बुलाते हैं सर, बुलाते हैं, हाँ बुलाएंगे सर। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने ब्रदर योगेश पुजारी से, वो इन दो बच्चियों की जो असली क्रिएटर हैं, उनकी मदर शारदा जी, उनको और दोनों बच्चियों को लेकर कृपया स्टेज पे आ जाएं। हाँ जी बेटा, योगेश कम, यू कम कम कम। मंत्री जी बुला रहे हैं आपको। सर ये हैं योगेश जी। सामान लाओ ना।
थैंक यू सर। सर कृपया स्थान अपना ग्रहण करें सर। पुरन पुरन स्टूल लिया, स्टूल स्टूल। हाँ वैसे छोटी। आज का दिवस एक जादुई दिवस है। पहले हमारे एआई के डोमेन एक्सपर्ट ने बताया कि एआई कोई जादू नहीं है, उसको ऐसा नहीं कि कोई उसको जादू है कि आप जादू करेंगे और उसके अंदर से कुछ जनरेट हो जाएगा। फिर पल्लवी जी ने हमको जादुई शक्तियों से परिचय कराया कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो हमने सोचा कि जब इतनी जादुई चीज़ें हो रही हैं तो हम क्यों ना अपने बीच आज एक लाइव जादूगर को बुला लेते हैं। तो हमारे बीच में आज हैं जादूगर शंकर जी। 1950 में आपका जन्म हुआ, ये हमारी अपनी दिल्ली के हैं। आज की तारीख में जादूगर शंकर ने देश विदेश में मिला के हजारों 30,000 से ज़्यादा शो कर चुके हैं। 20,000 के आसपास तो शो आपने चैरिटी में किए हैं बगैर किसी प्रकार का कोई शुल्क लिए, और थैंक यू सो मच सर, हमारा शो भी उसमें शामिल है। आप बहुत अच्छे, बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप जादूगर हैं। आप दुनिया के 4 श्रेष्ठतम जादूगरों में से एक हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि शंकर जी आप हमारे बीच आज मौजूद हैं और हम आपके जादुई उसको देखेंगे। एक मेरे जरूर है, क्योंकि मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, तो मेरा एक निवेदन है कि सब लोग अपने अगल बगल के लोगों का ध्यान कर लें, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये बंदे को गायब कर देते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखना कि आपके बगल में जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई गायब न हो जाए। शंकर जी आपका स्वागत है हमारे स्टेज पर। लाइट, व्हाइट कलर की लाइट अगर कर दो, हॉल की लाइट जलानी है। हाँ ठीक है, that's it.
हेलो मैजिक 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 इज ए फाइन आर्ट। अभी आपने देखा, अभी इतना नजदीक से आपको जादू दिखा रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, कोई भी एक पीस ऑफ पेपर होगा सर। एक रिक्वेस्ट है सर, एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, मुझे मत गायब करना सर, मुझे ही कुछ कंपेयरिंग करनी है। ये पीस ऑफ पेपर है, 1 मिनट बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं। अब आपको क्या दिखाई देता है? अभी 1 मिनट बाद इनको दे। म्यूजिक म्यूजिक लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। और कोई 1 मिनट के लिए नेटवर्क चलता है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी एक बोलिएगा, कोई भी एक नंबर। 7 सब 1 मिनट अगेन, दोबारा कोई भी नंबर, दोबारा 7। अभी आप देखिएगा ये 7 मिनट पीछे घड़ी जाएगी, जा रही है जी सर, जा रही है। क्या टाइम क्या हुआ है सर? 8:14 पे चालू किया था, अब 8:07 दिखा रही है। कितना? 8:07 सर। 8:07। सभी मोबाइल में यही टाइम होगा, देखिएगा 8:07। देखिएगा 1 मिनट। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो, दे दो, जल्दी दे दो, तब तक सर आप हैं बोलना चाहें? हाँ आप बोलिए, आप कुछ हमको पर्दा हटवा देना, थोड़ा सा माइक आने दीजिए, तब तक आप कुछ ठीक है कर सकते हैं, कुछ भी बोल के अपना कुछ बढ़िया। आप सबने हमारे आदरणीय जादूगर शंकर जी का बहुत सारे कर्तव्य और कारनामे देखे, अविस्मरणीय थे। और उन्होंने एक कारनामा और किया है सर, उन्होंने स्टेज की पीछे की रूपरेखाएं पूरी बदल दी है। अभी जब पर्दा खुलेगा तो आप देखेंगे कि स्टेज के पीछे एक नई दुनिया है, और वो दुनिया है राजस्थान की। वो राजस्थान जो अपने शौर्य की गाथाओं के लिए सुविख्यात है। उसी राजस्थान की उसी मरुभूमि, उसी टीलों से पनपता है राजस्थान का लोकगीत। और हम आज आपके बीच लाए हैं श्री दयाराम भाण जी को, जो मीरा की नगरी मेड़ता
के निवासी हैं। वो 30 साल से लोकगीत की सेवा में लिप्त हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक संगीत की शिक्षा अपने पिता हुकुमराज जी से सीखी और पिछले 3 दशकों से देश विदेश में भारत का नाम जागृत कर रहे हैं। बहुत सारे उनको सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं उन्होंने भारत सरकार के लिए, खास तौर से G20 में उन्होंने अपना सहयोग दिया था। उनका ऐसा मानना है कि उनकी जो ये कला है वो उनकी अगली पीढ़ी में जानी चाहिए। इसके लिए वो बच्चों को ट्रेन करते हैं अपनी शैली में, अपनी गायन शैली में। मेरा विश्वास है कि जब दयाराम भांड जी अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करेंगे, आप में से कोई भी अपनी सीट से हिल नहीं पाएगा। तो प्रस्तुत है दयाराम भांड एंड पार्टी। पधारोड़ा सभी मेहमाना ने क्षमागणी हो। नमस्कार, क्षमागणी। सबसे पहले हमारी राजस्थान की मर्यादा रही है वेलकम सॉन्ग। पधारो हमारे देश के श्री हमारा। हेलो 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 हार केसरिया गज कामणी तो केसरी लंबा जी के आप पधारो हो साई बा हार करके सरिया भेस जी हो
जी ओ केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। आदि पधारो मारे देश जी। देश जी ओ केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे आदि भारती राजसी होतान में लियो राम देवी अवतार। ओ केसरिया बाल में आवो नी पधारो मारे देश जी। केसरिया बाल में आवो नी पधारो मारे देश जी। ओ केसरिया बाल में आवो नी पधारो मारे पधारो मारे देश। राजस्थान की हमारे चली नृत्य है। बदला लेता जो घुमेर दार लंजो। ओ बदला लेता जो ओ सगीना लेता जो घुमेर दार लंजो। घुमेर दार लंजो ओ घुमेर दार लंजो दी घुमेर दार ओ लंजो दार लंजो ओ सगीना लेता दी बादिला लेता जो घुमेर दार लंजो। ओ बादिला लेता जो घुमेर दार लंजो। मारे माथा पे रखड़ी लई जो और रखड़ी पे रतन चढ़ाई जो। बादीला जो दी बादीला लेता जो
घुमेर दार लंजो ओ साहिला लेता आजो ओ बादीला लेता आजो घुमेर दार लंजो घुमेर दार लंजो ओ घुमेर दार लंजो घुमेरा लेता आजो बादीला लेता आजो घुमेर दार लंजो कुमार पगलिया ने पायल लई जो मारा पिछिया रत्न जड़ई जो मारा पगलिया ने आजो ओ साहिना लेता आजो ओ घुमेर दार लंजो ओ बादीला लेता आजो ओ साहिना लेता आजो ओ घुमेर दार लंजो ओ साहिना लेता आजो दी घुमेर दार लंजो साहिना लेता आजो ओ बादीला लेता आजो घुमेर दार लंजो ओ घुमेर दार लंजो ओ घुमेर दार लंजो घुमेर दार लंजो ओ घुमेर दार लंजो ओ घुमेर दार लंजो लाडली सा तिरमी बाबो सारी लाडली ओ जिया तो मोचा पिचली लारी बोली मारी तिरमी ने चढ़ती देवी के ढोला मेरे को तो जो ऊंची बातिला तारी बात भोली मारी चिरे मीने तो डाले मारा जेठ सा भोली मारी चिरे मीने ओ कोई दूजे तो डाले साहेब आप भोली मारी चिरे मीने तो चौबो बाधिला तारी बात भोली मारी चिरे मीने तारी बात भोली मारी चिरे मीने ओ मैं तो जो मुझी डाली तारी बात भोली मारी
किरमीने ओ भोली मारी किरमीने ओ भोली मारी किरमीने। पेश कर रहा हूँ सूफी कलाम धमाधम मस्त कलंदर। बंदे का काम नहीं, बंदे का काम नहीं राम पीर तेरा नाम लेने का। ओए बाबा का काम है गिरते को नाम लेने का। तेरी तो दुल्हन बनी दूल्हा न जानती है, सारे हिंद के बादशाह बाजा महीने लाज मेरी, लाज मेरी, लाज मेरी पट्टी लकड़ियों बना दूंगा बाबा कलंदर मस्त कलंदर धमाधम नंदर ओ लाल के नीला नंबर धमाधम नंदर। मेरी हो लादी मेरी हो लादी मेरी पत्ते रखियो बला झूले लाल ने ओ तितली दा ओ तितली दा सती सब कलंदर हर धमाधम मस्त कलंदर हाँ अली दा पहला नंबर। चरण चरण तेरी नौबत बाजे, चरण चरण तेरी नौबत बाजे। याली बजे झूले लालन दा, याले बजे झूले लालन होते वंदा ओ चिंदली दा सती साबा कलंदर मस्त कलंदर आओ दमादे दिल आओ अली दा पहला नमोला दमादम मस्त कलंदर।
मैं दुखियारी पिया दर पे आवा आओ नजर करो तो पीरा में दरियावा ओ तेरे सिवा ना मेरा कोई नहीं ओ झूले लालन सेवन दा कोई नहीं ओ झूले लालन ओ सेवन दा ओ चिंदली दा सती सब कलन हक धमाधम मस्त कलंदर आओ धमाधम जेल आओ गली दा पहला नंबर आओ धमाधम कलंदर आओ धमाधम मस्त कलंदर दिल्ली का दूल्हा भी है ओ पानीपत में कलंदर का मोदा भी है आओ इत्र के पानी से मिला दे मुझे ओ दूधिया पोता पहना दे मुझे मेरे दिल पे कौन है अल्लाह बेटा हाँ कलमा पढ़ती हूँ रसूलुल्लाह होता मेरी पत रखियो बला जुले लाल लाल सीधा कति साबास धमाधम मस्त आओ आओ धमाधम मस्त कलंदर 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 मटकी मिलती है जो कि 4 भवन मिलती है जो हमारी मेहता की परंपरा है काली आंटियून की काली आंटियून की गांठ गठिली होय बाल पनारी दोस्ती बड़ी गठिली हो लुमारी बाटीला मारो गोरे बंद नकीरा ओ माली जा मारो गोरे बंद नकीरा गोरे बंद नकीरा
तुम्हारी बाटीला मारो गोरे बंद न किरलो ओ गाली जा मारो गोरे बंद न किरलो पोया पोया राज मारो गोरे बंद मारो गोरे बंद न किरलो ओ गाली जा माला गोरे बंद न किरलो लेवे रात भले लेवे जो भले ता भले लेवे रात मारो गोरे बंद न केरा ओ बाडिया बनड़ा गोरे बंद न केरालो ओ केसरिया बनड़ा गोरे बंद न केरालो
पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके जरा जरा छोटे डोगो बाल मामर पल्लू लटके रे मारो पियो भड़के पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके जरा चोको जरा चो डोगो बाल मामर पल्लू लटके जरा चो डोगो बाल मामर पल्लू लटके सारे ताता मारी छुपा चिली के हो छिपा सारे अरे सामो बेटो देवरियो बाबी ने नीरिके ओ सामो बेटो देवरियो बाबी ने नीरिके जरा सो तो हो जबाल मामर पल्लो लटके जरा सो तो हो जबाल मामर पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके मारो हेलो सुनो नीरा मापे ओ मारो हेलो सुनो नीरा मापे मारो तामरो रुणी तेरा धनिया काटी माल नीरा कमरा माता मेरा मारो हेलो मापे ओ मारो हेलो सुनो नीरा मापे आंगलिया ने आका देवे पांगलिया ने पावरे माया देवे हरी ओ राम सातीर तारी जगावा मेरा दिन जगावा उनी तेरा धनिया अजी बाल दीरा कमरा माता भेड़ा तेरा मारो हेलो सुनो नीरा मापे मारो हेलो सुनो नीरा मापे मारो हेलो सुनो मेरा बाते मारो हेलो सुनो मेरा बाते
मनोरंजक परफॉर्मेंस के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दें श्री दयाराम भांड जी और इनके समस्त साथियों के लिए, जो ये सब आज सवेरे 4 बजे चले थे राजस्थान से। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी से, जस्टिस दिनेश मेहता और विनोद कुमार जी से, जस्टिस भटंग सर से, महावीर सर, कृपया मैं निवेदन करूंगा जादूगर सम्राट श्री शंकर जी से कि कृपया वो भी स्टेज पर आएं। आपको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे सर, एक स्मृति चिन्ह देके। एक सूचना है कि प्रोग्राम के बाद डिनर की व्यवस्था है यहाँ ऊपर 2nd फ्लोर पे टेरेस पे। बस 2 मिनट की और कार्यक्रम बचा है, उसके बाद हम सब ऊपर चलेंगे। बहुत ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ खाना खा के वापस आ जाएंगे। सर जादूगर सम्राट शंकर जी को भी सम्मान। आइए आइए सर। आपने इनको दिल्ली का बता दिया, राजस्थान में सर अभी दिल्ली में ही रहते हैं शायद। पूछो ना एक बार बालकनी से। मैं आग्रह करूंगा पल्लवी जी से, कृपया आप भी मंच पर आएं। हम आपको भी एक स्मृति चिन्ह से अलंकृत करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मैं जल्दी से रिक्वेस्ट करूंगा सारे आईटीटी के मेंबर्स प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाएं, ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए सर के साथ। आप इधर आ जाओ सर। Thank you very much. We can now proceed for the dinner on the 2nd floor. आपके सहयोग और आपके पेशेंस का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.